Okay, so let me introduce sir. So thank you so much, sir, coming to Kalinga platform. रिक्वेस्ट आपण आमे रिक्वेस्ट करितलु बहुत पिला रिक्वेस्ट भी करथले कि आपण सेशन रिक्वेस्ट करितले आपण बिजी शेड्यूल टाइम बाहर करू सो फास्ट लेट मी इंट्रोड्यूस UPSC Sir, already in verse UPSC, they 343 rank already all India rank, and already 2020 batch sir already OAS-RANK16 rank पाइछन्ते and deputy collector हिसाबे sir already job रे अछन्ती मयूरभंज sir कर जो जर्नी हमें sir कर जो इंस्पायरिंग जर्नी केमिति sir already प्रिपेयर करी कि जे जॉब रे थाई कि भी UPSC भलिया गोटे टॉप मोस्ट एग्जाम जदि हमें कहबा इंडिया रे सब टॉप मोस्ट एग्जाम टू क्रैक करिबा तो एटा गोटे प्राउड रो मोमेंट हम समस्त पई कि सर हम पाखरे अछंती एंड तांकर जो एक्सपीरियंस शेयर करिवे एंड आल्सो सर ऑलरेडी जोडे गोटे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जदि हमें कहबा ओडिसा रो बेस्ट इंस्टीट्यूशन जदि इंजीनियरिंग रे कहबा NIT राउरकेला रो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रे सर ऑलरेडी बीटेक करिसथि एंड देन हमर जदि UPSC CAPF परीक्षा रे हमर जो सेंट्रल जो पुलिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स रे भी सर ऑलरेडी जो 32 रैंक रे पाई की तो से जॉब छाडी थिले एंड ओएस पाइला पर डेप्यूटी कलेक्टर थिले एंड नाउ अगेन UPSC सर क्रैक करके अबे जॉइन करते जाउ सो थैंक यू सो मच सर टू keep our request and coming and addressing the students. So we'll pass request. एडारो किछि दरकार नथिला. I'll just be glad if I can help in any way. Thank you very much. सर जो जर्नी सर शेयर करिवे एंड ऑलरेडी जार हमें प्रथमे सर एई थरा से पास करि न थांते होय तो सारा जीवन तांको पई UPSC एक स्वप्न होई रहि जाई एई थरा थिला ताको षष्ठ तथा शेष Thank you. से हाल मारी तारे भितरे ओडिशा सिविल सर्विस रे उत्तीर्ण एपी कलेक्टर काम करिबार अभिज्ञता अर्जन करी एथर शेष प्रयास रे तांको स्वप्न को से पूरा करिबारे सफल होइछन्ती ए हेउछन्ती बालेश्वर जिल्ला कोइना ब्लॉक रो विश्वजित पंडा चलित थर UPSC परीक्षा रे जे 343 रैंक रखी उत्तीर्ण होइछन्ती शेष अटेम्प्ट रे तांकर सफलता परिवार लोकन को मन रे खुशी आनंद ने बाकी सिक्स अटेम्प्ट गला पर सेतिरे सफलता मिली गथि तो साइन करते हैं सुनिबा साइन कर जो जर्नी साइन कर जो ऑलरेडी को UPSC रे जर्नी स्टार्ट होला एंड केमिति हमरा UPSC रे OPSC रे ऑलरेडी क्वालिफाई हला पर तो बीसी शेड्यूल भितरे रही की ता पई प्रिपेयर करूथिले सर UPSC रे तो साइन ऊपर में डेफिनेटली टाइटल जर्नी Thank you everyone. First तो मोइटा खुशी आ निजर सौभाग्य मने करछि जे आज एटी जो ओडिया कैंडिडेट्स माने अछन्ते एस्पायरेंट्स माने अछन्ते तांको गहन रे रही कि आज मते इंटरेक्शन करिवार अपॉर्चुनिटी मिलिछि तो जते बेले भी दीपक भाई मते कहिले आसंतो आपण ओडे इंटरेक्शन सेशन नियंतु तो मु संगे संग हां कहितली काइना सब बेले मोर गोटे इच्छा थाए मु तो पाई गली किंतु केमिति ओडिसा रु बेसी पिला पाइबे तो सेति के अपॉर्चुनिटी मे भी ओडिसा रे मिलुनी जति कि दिल्ली बा सेपटर पिला को मिलुची तो सब बेले मोर एटा माने इवन आफ्टर गोइंग इनटू द सर्विस इट विल बी माय एफर्ट दैट जो भी वे रे मु ओडिसा रो पिला मान को खाली ओडिसा नुहे बट स्पेसिफिकली ओडिसा रो पिला मान को जदि मु हेल्प करि परिबी मु जो जर्नी देई के आसी छि मु सेटा शेयर कले जदि से माने किछि भी भाबर उपकृत होई परिबे तो आई विल बी रियली ग्लैड तो लेट्स मूव टू द पॉइंट डायरेक्टली
कहीं ना आपण माने प्रिपरेशन करूचंती तो ए जो जर्नीटा थाए इज सेकंड इज मिनिट इज इंपोर्टेंट तो मु संगे संग पॉइंट को ही जीबी आपण को माने मोर जर्नी कोन रहितला सेठू कोन आपण को इनपुट मिली परिबो कोन सिखि परिबो बे अप्रोच केमती रहिबा कथा ओपीएससी हो बा यूपीएससी हो एबे तो ओपीएससी रो पैटर्न भी चेंज हे गलानी तो ऑलमोस्ट ओपीएससी यूपीएससी दिटा जाको साइमल्टेनियसली आपण प्रिपेयर करि परिबे तो फर्स्ट गोइंग इनटू माय जर्नी सो दैट आपण मु जहा कहिबे आपण बेटर रिलेट करि परिबे सेति पई मु सेटा कहूची दीपक भाई तो ऑलरेडी कहिले सेठी गोटे वीडियो भी शेयर कले तो मु 2016 रे ग्रेजुएशन मोर सरीतला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रे एनआईटी राउरकेला रु तो मु आगरु ही माइंड मेकअप करि सारथिली जे मते यूपीएससी दबार अछि मते सिविल सर्वेंट होबार अछि भारतीय स्तर रे बा आईएएस होबार अछि आईएएस नहले आईपीएस होबार अछि तो सेटा मु आगरु ही सेटा मोर पूरा कन्विक्शन आसी सारथिला तो मु ग्रेजुएशन टाइम में भी पढ़ा पढ़ी करूथली बट नॉट होल हार्टेडली तापरे मु भाबिली से चाकरी करबी माने with being very clear in my mind that after 1 year I will be resigning तो मु लिंडा इंडिया रे काम करथि 2016 रु 17 तो सही काम करिया भितरे मु गोटे अटेम्प्ट देइथिली प्रीलिम रो I could not clear prelim still I did well तो कट ऑफ रु 5-6 मार्क 4-5 मार्क एमदी कम थिला तापर मु छाडी देली चाकरी 2017 रे आ गोटे अटेम्प्ट देली प्रीलिम रो सेते पूरा होल हार्टेडली प्रिपेयर करिकि देइथिली बट जेमदी कहा जाय यूपीएससी रे सक्सेस पाइबा पई आपनकर बहुत गुणा फैक्टर्स कन्वर्ज कले आपन सक्सेस पाइबे तो I think I did well, but still I could not clear prelims that time as well. So it was my second failure in prelim. 2018 attempt. 2019 में तापर देली 2019 I reached up to interview. It was my third attempt. Third attempt रे मु इंटरव्यू जाए जाईथिले. किंतु फाइनल रिजल्ट रे मोर हेई नथिला. तो स्टिल मोर मन भांगी नथिला मोर सही सब बेले इच्छा थिला जते पर्यंत मो कंट्रोल रे जिंस अछि I will keep trying. तापर जदी न होची सेटा अलगा कथा. तो 2020 अटेम्प्ट देली मु पुनी 2020 रे मोर मेंस हलानी सही अटेम्प्ट परे आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स मु सबु बेले भाबे आमे कहिताउ जे प्रीलिम्स रे बहुत लक रो रोल अछि मेंस रे मेबी टे कम अछि किंतु अछि इंटरव्यू रे अछि लक रो रोल बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर कंट्रोलेबल्स तो आपनकर सबले चेष्टा रहया कथा जे आपन सही कंट्रोलेबल्स गुडा को केमति कंट्रोल करिवे डोंट थिंक अबाउट द अनकंट्रोलेबल्स देयर विल बी मेनी थिंग्स दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल बट सेटा तो आपनकर भावना जमा रहिबा कथा नुहे आपण भाबी जो भलो कली स्टिल आलानी से मार्क देई नथिवो कोन क्लरिकल एरर लेतो दैट इज नॉट योर कंसर्न इज टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस तो से भाबी कि मु एमा प्रचेष्टा जारी रखथिली 2020 रे मोर मेंस हलानी तो जते बेले हलानी चारिटा अटेम्प्ट ऑलरेडी पड़ीथिला मो पाखरे दुईटा अटेम्प्ट थिला तो देन आई स्टार्टेड बिकमिंग अ बिट कंसर्न्ड स्टिल मोर थिला जे आई एम नॉट डन येट तो तापरे मु सीएपीएफ देली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सेटा भी यूपीएससी रो गोटे एग्जाम ऑलमोस्ट यूपीएससी पैटर्न रे ही थाए टिके माने डाइल्यूटेड वर्जन एते सारा सब्जेक्ट्स न थाए तो सेटा मोर फर्स्ट ट्राई रे ही हेई गला आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 32 तो सेटा मु जॉइन कलिनी किंतु एक्सटेंशन नेली आ 2021 अटेम्प्ट मु देलिनी आई थॉट टू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन के तो बेले बेले आपनकर जॉन बेले बेले फर्स्ट चांस रे ही हेई जाई पारे बेले बेले आपनकर चारिटा पांचटा चांस देला परे जदी हबनी स्टिल यू नीड टू गो ऑन इट्स अ मैराथन तो आपन को सेटा सस्टेन करिया पई बेले बेले ब्रेक भी नवा को पड़िबो बट विदाउट फॉरगेटिंग योर रूट कोन पई आपन से जर्नीटा स्टार्ट करथिले तो आई टुक ए ब्रेक 2021 अटेम्प्ट से भीतर मो सीपीएफ हेई जाइतिला तो आई वाज अ बिट रिलैक्स्ड तो मु भाबली मु जदी ब्रेक नउची देन लेट मी ट्राई ओपीएससी काई ना काले हबो न हबो नोबडी नोज तो देयर शुड बी सम बैकअप ऑप्शन आ मते सीपीएफ एससी रो सेमती इंटरेस्ट नथिला माने सही सेक्टर रे काम करिवार त इंटरेस्ट नथिला तो फर्स्ट चांस रे ही ओपीएससी ओएस रे मोर रैंक 16 आसला now I was relieved so I had nothing to lose so I thought कि आगुर जो अटेम्प्ट का देइथिली I was well prepared मो पाखरे बहुत नॉलेज थिला मो बहुत ही भलो आंसर लिखिथिली मॉक्स रे बट इट इज आफ्टर ऑल इट इज अबाउट एग्जीक्यूशन आपण सही 3 घंटा रे बा सही 3 घंटा रे केमिति एग्जाम रे परफॉर्म करछन इट्स ऑल अबाउट दैट तो सेटा सेबे पर्यंत मु क्रैक करि पार नथली किंतु आफ्टर सक्सीडिंग इन ओएस मोर सही कॉन्फिडेंस आसला बिकॉज़ सही फियर का पळेला ता पर दुटा अटेम्प्ट आई थॉट आई डिड वेरी वेल इन मेंस तो तापर पुनी मोर इंटरव्यू हला इट वाज माय सेकंड इंटरव्यू बट देन अगेन आई कुड नॉट क्लियर बी इन द फाइनल लिस्ट 2022 अटेम्प्ट तो तापर मोर लास्ट अटेम्प्ट थिला रिजल्ट बाहरिवार माने फाइनल रिजल्ट बाहरिवार 6 दिन पर प्रीलिम्स थिला बट स्टिल माने आई कुड एब्जॉर्ब दैट प्रेशर एंड गो टू द प्रीलिम हॉल एंड appear in the exam with composure so that is what it is एटा गोटे एटीट्यूड रो परीक्षा भी करे खाली नॉलेज रो बा आपनकर राइटिंग स्किल बा सेही को खाली आपनकर एप्टीट्यूड को खाली टेस्ट करूनी दिस एग्जाम इज आल्सो टेस्टिंग योर एटीट्यूड तो सेटा बहुत बड़ इंपोर्टेंट कथा तापर मु दिल्ली मोर प्रीलिम मु जानली हे जीवन याती
तापर मेंस पई लागि पड़ले मु जेतु ओपीएससी ओएस मु पाई सारी थिली तो मु सेते बेले मोर ट्रेनिंग रिजर्व ऑफिसर भाबरे पोस्टेड हे सारथिली मयूरभंज रे बट जेतु इट वाज ट्रेनिंग पीरियड इन द इनिशियल फेज तो आई कुड गेट लीव इजीली तो मेंस रो जो मेंस और प्रीलिम भितर विंडो थाए 3 मास मु छुट्टी नै गली तो सही टाइम रे मु वॉलंटरली या पई प्रिपेयर एथरा मु भाबिली जे मेंस पर बहुत भलो होई छी आई विल बी डेफिनेटली गेटिंग अ रैंक एंड अ वेरी गुड रैंक तो एज एक्सपेक्टेड मोर ये रे हे गला मेंस रे हे गला तापर मु इंटरव्यू देली इंटरव्यू रे टिके आई फंबल ड्यू टू सम रीजंस आई गॉट नर्वस सो इंटरव्यू स्कोर वाज नॉट दैट गुड किंतु फाइनली आई गॉट अ रैंक एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि 6 अटेम्प्ट परे फाइनली मते गोटे रैंक मिले आई वाज एक्सपेक्टिंग मे बी अ बेटर रैंक बट देयर इज नो लिमिट टू ह्यूमन एम्बिशन आपण सब बेले भाबिबे जे एटा मोर आईपीएस हे गला आईएएस काई केलानी आईएएस ले भाबिबे कैडर काई केलानी कैडर हेले भाबिबे भलो डिपार्टमेंट काई के बिलानी देयर इज नो लिमिट टू ह्यूमन एम्बिशन आपनकर सबले प्रचेष्टा रहिबा कथा जे गिव योर बेस्ट now आपण जोटा करूचंदी जोटा परीक्षा रे करिके आछंदी यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट आई गेव माय बेस्ट आई परफॉर्म माय बेस्ट तापर न होउचे दैट्स सेकेंडरी थिंग सब लक कथा केबे भी भागिबेनी इट इज अबाउट लक बहुत फैक्टर्स कन्वर्ज करले आपनकर हबो बट दैट इज नॉट योर कंसर्न इज टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स बहुत कंट्रोलेबल्स फैक्टर अछि सो दिस इज माय जर्नी आपण बेटर रिलेट करि पारिबे बोली मु कहिला हमर ऑप्शनल थिला साइकोलॉजी सो आई ग्रेजुएटेड in electrical engineering from NIT Rourkela but my optional was psychology so now coming into the preparation apanଙ୍କର preparation केमिति कोन रहिबा कथा first मु आपन को general approach कथा कहबी how to approach this exam तापरे I will split into prelims and mains prelim पई कोन रहिबा कथा mains पई कोन रहिबा कथा mains रे हमें पेपर वाइज केमिति कोन करिया कथा आ केमिति दिटा को simultaneously prepare करि परिबे एबे प्राय जे भी यूपीएससी दउचंदी समस्त ओपीएससी दउचंदी तो गिव इट आपनकर गोटे हाथ रे रही जाइथिले यू विल फील कॉन्फिडेंट जेमति मु कहउतले ना एग्जीक्यूशन रो कथा तो से एग्जीक्यूशन टा बेटर होबो इफ यू ऑलरेडी हैव वन जॉब तो फर्स्ट आउ एटा करिया पूर्व आउ गोटे जिंस मु कहबा चाहिबी मोर कोन एसोसिएशन थिला कोचिंग संगरे बहुत समय एटा हिता जे कोडी गोटे मॉक दे देथिबी दे विल टेल कि हमर या नैतला तो मु जीएस पई किछि भी कोचिंग नै नथली जनरल स्टडीज पई ऑप्शनल पई साइकोलॉजी रे कोचिंग नैथली बाजीराम रे मुकुल पाठक सरंग बा तापर हियर एंड देयर एमिति मटेरियल जहां मिले सेमिति मटेरियल पढितली किछटा कोचिंग इंस्टीट्यूट रो आउ आफ्टर प्रीलिम्स बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इन माय लास्ट 2 अटेम्प्ट्स फोरम रो गोटे करंट अफेयर्स कोर्स थाय दीपिन सरंग सेटा नैथली नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट कोचिंग फाउंडेशन कोर्स क्लासरूम प्रोग्राम मु किछि नैली बस ऑप्शनल पई दैट्स इट सो आई वांट टू बी वेरी क्लियर तो सेटारे कारि डाउट न रहो coming into the approach that is very important मु सबु बेले कहे if you are preparing for UPSC or OPSC to know the demands of the exam ए एग्जाम कोन डिमांड करूची आपन को सेटा जदी थरे जानि गले then you will be able to know what to study and how to study सेटा बहुत इंपोर्टेंट आपन को बहुत टाइम रे लागिवो जे सिलेबस इज वेरी वास्ट एते जिंस मु कवर केमिति करी किंतु सिलेबस सेते वास्ट नुहे if you will approach it clinically आउ जदी आपन एग्जाम रो कोन डिमांड अछि सेटा को बुझी जिवे ताले आपन को बहुत कम जिंस पढिबार अछि सिलेक्टिवली पढिबार अछि तो अप्रोच केमिति करिवे एग्जाम रो डिमांड कोन सेटा को बुझिवे केमिति बुझिवे फर्स्ट इज सिलेबस मु जोटा कहू छी सेटा ओपीएससी पई भी लागू यूपीएससी पई भी लागू इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन ता पई भी लागू आपन जदी इन बिटवीन योर प्रिपरेशन बट आपनकर ए पर्यंत हेइनी सेमान को पई भी लागू तो फर्स्ट होची प्रीवियस सिलेबस को आपण इच जो माइक्रो टॉपिक लिखाई तो सेवडा को आपनकर पूरा मुंड रे थिवा दरकार ब्लड रे थिवा दरकार सो दैट आपण किछि भी पढुचंदे बीट करंट अफेयर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर और एनी मैगजीन और स्टैटिक portion of the syllabus that you are reading from say Lakshmikant or Spectrum सेटा को आपण सिलेबस संगे रिलेट करि पारुथवा दरकार धरा आपण पढुचंती सिपोई म्यूटिन ने म्यूटिन रे कोन क्वेश्चन आसी परिवो मेंस रे सेठी कोन केमदी युद्ध होइतला सेटा आसीबोनी सेठी आसीबो जे तार कॉन्सिक्वेंस कोन हैला बुझले काहे की हैला तो सही डायमेंशन नु पचारिबो सेटा जदी आपण सिलेबस स्टडी करिवे आउ सिलेबस को रिलेट करिवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संगे ताले आपण जानि परिवे तो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट गिव ए huge amount of your time of your preparation in the beginning phase to analyze the previous year questions and relating it to the syllabus आपण सेटा जदी जानि गले ना आपनकर फाउंडेशन स्ट्रांग हे जिवो तापर आपण जहा भी पढिबे ठीक डायरेक्शन में पढिबे हमें often डायरेक्शन लेस हे जाउ थाउ टाइम दोउचु बहुत एफर्ट दोउचु स्टिल होउनी because we don't understand the demands of the exam सब बेले मु सेटा कहे
तो सिलेबस टाको बीएड ओपीएससी यूपीएससी प्रीलिम रो सिलेबस देखिबे, मेंस रो सिलेबस देखिबे, तो जीएस 1 2 3 4 सेमती सेग्रीगेट हेची, तापर पुनी ता भितरे जो सेग्रीगेशन हेची थीम वाइज देखिबे, तापर ताकू रिलेट करिवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रो बहुत एबे कोचिंग जे भी बाहर करूचंती से माने सेग्रीगेट करी के ऑलरेडी दे दउचंती, तो ताकू आपण रिलेट करिवे जे से माने कोन पचारचंती। मोर सिलेबस रे मेंशन हेची इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इंक्लूसिव ग्रोथ रे को थीम रो से माने क्वेश्चन पचारचंती, पचारे व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, is inclusive growth happening in India, what is the challenges to inclusive growth, inclusive growth relating to sustainable growth, how the mane they go on simultaneously, ये सब थीम रो माने I am just giving you some examples to understand कि कोन mo कहूची। तो सिलेबस टा को भल की मने रखिबे, पूरा आपनकर ब्लड रे जेंति रहिबो, then relate it to the previous year questions, देखि थीम गुडा को बाहर करंदु से माने को थीम रे क्वेश्चंस पचारुछन, then start reading। तापर जदि आपण पढिबा स्टार्ट करिवे आपनकर डायरेक्शन टा बहुत भलो रहे। तो दैट इज द अप्रोच टू एग्जाम। आउ माने आपनकर सबु बेले फर्स्ट चेष्टा रहिबा कथा जे 5टा अटेम्प्ट अछि 6टा अटेम्प्ट अछि, भाबिया कथा नय मोर 6टा अटेम्प्ट हला, स्टिल आई एम टेलिंग इट, भाबिया कथा नय जे मु एटा 2 वर्ष रे एतिकी कवर करी, 3 वर्ष रे करंदी पिला एंदी ए वर्ष एटा कवर करी, से सेमति भाबिया कथा नय। ट्राई टू क्रैक द एग्जाम इन द फर्स्ट ट्राई इटसेल्फ। तापर बहुत दिन तो भाग्यर कथा अलगा अछि, न हैला दैट सेकेंडरी, बट यू शुड गिव योर बेस्ट, यू शुड ट्राई टू क्रैक द एग्जाम इन द फर्स्ट ट्राई इटसेल्फ, बा जो भी अटेम्प्ट नेक्स्ट दोचंदी सेही ट्राई रे ही करिया पई चेष्टा करंतु। ता बट जदी न हैला यू शुड कीप गोइंग। आ अलगा फैक्टर्स भी डिपेंड करिवो, आपनकर एक्सटर्नल सिचुएशन कोन अछि ताको नै कि डिसाइड करिवे, बट कीप गोइंग। न हैला सेटारे भांगी पडिवार नाही, आपण एन्जॉय द प्रोसेस। सब बेले मु कहे मु एबे हेई गला मते रिजल्ट मु सब बेले कहूची जे आई एम नॉट एप्रिशिएटिंग द रिजल्ट दैट मच, किंतु मते जो प्रोसेस टा 6 वर्ष जो मु प्रिपेयर कली सेटा जो जिंस मते सिखेला, नाउ नॉलेज पर्सपेक्टिव रो आई हैव सो मच नॉलेज, देन आई कैन कन्वर्स विथ एनीबॉडी, बी इट ही और सी फ्रॉम एनी फील्ड, ता संगे मु गोटे कथा ही परिबी, मोर पर्सनालिटी नोरिस हला, तापर मोर एटीट्यूड रे कोन चेंज आसिला, मु बेसी रेजिलिएंट हेली, मु जो 5 थर फेलियर हैला मोर सेटु मु हम्बल हेली। आगु मु भाबतले आई एम द किंग, आई कैन क्रैक दिस एग्जाम इन द फर्स्ट ट्राई इटसेल्फ, न हैला परे आई हैव बिकम मच मोर हम्बल। तो सही प्रोसेस टा कोन आपन को सिखै जे सेटा को रियलाइज करिवे जते बेले, तो यू स्टार्ट एन्जॉयिंग दैट प्रोसेस, सेते बेले आपन को फेलियर रे एते आपन भांगी पडिबेनी। बट ता माने न जे चिल आउट है कि आ फेल तो हेली हेली सेंति न, यू शुड नॉट फील लेट डाउन, बट सेही थ्रू कोन फेलियर काहे कि हैला सेटा को भी एनालाइज करिया इंपोर्टेंट। माने खाली एमते देई चालू थले गोटे पर गोटे अटेम्प्ट सेमति हबनी, गोटे अटेम्प्ट न हैला यू शुड एनालाइज कि कोन पई हैला, जेंति मु फर्स्ट दिथर मोर प्रीलिम हैलानी, सो आई एनालाइज, तापर आई इंप्लीमेंटेड सम थिंग्स, ता परठु 4टा अटेम्प्ट आई हैव बीन स्कोरिंग 20 मार्क्स अबव द कट ऑफ, सो देयर इज अ पैटर्न, इट इज नॉट प्योरली अबाउट लक, बुझचंदे तो आपन को सेटा फाइंड आउट करिवार अछि, से पैटर्न टा को फाइंड आउट करिवार अछि, आपनकर काहे कि हैलानी कोन इंप्रूवमेंट करि परिबे सेटा करिवार अछि। So this is the general approach to exam. I will repeat again, repeating it again and again, कारण mu may be in initial few attempts I have made this mistake. I had ignored previous year questions, not exactly syllabus. Previous year questions are very important. They will get repeated. The theme will get repeated. जब भी repeat न हैला आपनकर पढिबार जो approach ता सेठु आपन को ही मिलिबो, जते बेले आपन previous year questions को analyze करी कि syllabus संगरे you will connect the dots. So that is the general approach to the exam. Now I will come to each phase of the exam. Then I will discuss topic wise. उठ लिखिए वो। जहारो जहाँ doubt थी वो after it gets over, I will give you some time. You can ask your doubts. So first it चलिए तो directly
फर्स्ट फेज इज प्रीलिम्स आपण जत्ते मेंस पई भलो की प्रिपेयर होंतु जदी प्रीलिम्स क्लियर न कले नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर द एग्जाम सो देयर इज नो मीनिंग सो ईच फेज गुडा आपण से एवरी डू इंटरव्यू को नहीं दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट डोंट थिंक अबाउट इंटरव्यू डोंट वॉच इंटरव्यू वीडियोस से इंस्पिरेशन नु किछि मिलिबनी सक्सेस इज अबाउट 99% परस्पिरेशन 1% इंस्पिरेशन मु भी आज निजे एटी कहूची मोर टू इंस्पायर हेले किछि बेसी मिलिबनी यू कैन गेट सम इनपुट यू कैन गेट सम गाइडेंस बट आफ्टर ऑल इट्स योर हार्ड वर्क दैट विल डिलीवर सो परस्पिरेशन माने कोन बुझले तो परस्पिरेशन माने कते झाळो बोउछन एटा थॉमस एडिसन कहितले तो बेसी इंस्पायर्ड हेनी से वीडियो देखि कि रील आजकल सब आछे देयर इज सो मच इंस्टाग्राम पेजेस ऑफ ऑल टॉपर्स सो सेथिरु बेसी इंस्पायर करिवा होवार नाही जस्ट टेक द इनपुट्स फ्रॉम देम एंड यू वर्क तो प्रीलिम रे सिलेबस रे सेमते डिटेल्स लिखाई नै जेमते मेंस रे लिखाई छि गोटे जनरल लिखाई छि तो ओपीएससी रो सिलेबस देखले आपण यूपीएससी रो सिलेबस देखले यूपीएससी ओपीएससी प्राय समान अछि सिलेबस ताले ओडिसा स्पेसिफिक किछि अछि से ओडिसा स्पेसिफिक जिंस तळे ओपीएससी पई प्रिपेयर करथुवे डोंट नेग्लेक्ट इट एबे पचारु चंदी आपण से गुडा को माने जो स्टैंडर्ड बुक अछि सेतरु पढि सरला परे ओपीएससी पई जो भी आपण कोचिंग इंस्टीट्यूट रे पढु चंदी तांकर मटेरियल फॉलो करि परिबे बा जोठु भी को किछि करि कि तेडा को बहुत शीघ्र सार देई परिबे तो बेसिक्स बुक्स मु किछि कहि देबी जनरल सोर्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू फॉलो दैट सोर्स जेंत मु फर्स्ट कहितली कि एग्जाम रे उटे डिमांड अछि डिमांड का कोन डिमांड ता होछि सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिलेबस कोटे अछि सही एरिया रो क्वेश्चन आसीबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेमिति पढिछि सही डायरेक्शन रे क्वेश्चन आसीबो एंड यू हैव टू राइट आंसर्स बा प्रीलिम रे यू हैव टू फाइंड आंसर्स तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव दैट यू हैव टू मीट आपन को ऑब्जेक्टिव ता भलो की बुझिबार अछि दैट इज द ऑब्जेक्टिव तापरे कोठु पढी के आपण सेटा ऑब्जेक्टिव ता फुलफिल करछन दैट इज इमैटेरियल इट इज श्योर कि आपण को किछि गोटे जेन्युइन भलो सोर्स पढिबार अछि किंतु नॉट नेसेसरी गोटे पर्टिकुलर सोर्स रो पढिबार अछि आ आपण जदी गोटे भलो कैंडिडेट हेतिबे भलो की पढुतबे सीरियसली आपण को बागरे सेति के इंटेलिजेंस अछि आपण जानि परिबे कि सेही जो मटेरियल ता देहा होछि वेदर इट इज मीटिंग दैट डिमांड जहां सिलेबस अछि बा जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अछि सेही डिमांड पेटा मीट करूछि तो ए जो मटेरियल ता मु पढुछि दैट यू कैन जज तो तापर जोठु भी पढंतो इट इज ए मटेरियल सो नॉट नेसेसरीली मु जो सोर्स रो पढितले आपण सेही पढिबे एंड आई विल एडवाइज कि जो सोर्स रो पढिचंदे सेही सोर्स रो ही पढंतो कीप रिवाइजिंग हमरो गोटे फोटोग्राफिक मेमोरी भलिया थाए सेटा रिपीटेडली गोटे सोर्स रो पढले ही सेटा डेवलप होय आपण जने बारंबार अलगा अलगा जागा रो पढिबा आपण मेमोराइज करि परिबेनी खालतार इंटरफेरेंस हो तो सम स्टैंडर्ड्स रूप आपण जानिथिबे सेटा मु लेखिबेनी पॉलिटी पई धरो लक्ष्मीकांत तो हिस्ट्री पई हे गला आपनकर स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी पढिबे जहा दरकार ज्योग्राफी पई आपनकर एनसीईआरटी तापरे एनवायरनमेंट कोठु भी पढंतु कोचिंग मटेरियल रो पढंतु बा शंकर आईएएस रो पढंतु साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्टली आपनकर करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स को भी कोचिंग मटेरियल रो पढि परिबे बा जोठु भी इट इज अप टू यू आई विल नॉट गो दैट मच इनटू द सोर्स बिकॉज़ आई डोंट बिलीव सोर्स आर दैट मच इंपोर्टेंट आपन खाली एटा जज करिवार अछि जे वेदर दैट सोर्स इज इनफ टू मीट द डिमांड ऑफ द एग्जाम व्हिच आई टोल्ड दैट इज द ऑब्जेक्टिव तो जहां स्टैंडर्ड बही पढले आपनकर प्रीलिम रे फोकस होबा दरकार जो स्टैंडर्ड बुक्स अछि सेटु जदी क्वेश्चन आसिला स्टैंडर्ड बुक्स रो क्वेश्चन यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी रॉन्ग इट हैज टू बी राइट लक्ष्मीकांत रो गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन आसिला स्पेक्ट्रम रो गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन आसिला एनसीईआरटी रो गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन आसिला यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट देम रॉन्ग दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट इज द कंट्रोलेबल सेटा को आपण कंट्रोल करि परिबे तो लक्ष्मीकांत बारंबार पढंतु रीड बिटवीन द लाइंस रिवाइज 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 स्पेक्ट्रम सेमति पढंतु एनसीईआरटी सेमति पढंतु आ जहां भी मटेरियल रहला डोंट नेग्लेक्ट एनी टॉपिक आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री डोंट नेग्लेक्ट देम केते बेले कोउथिरु बेसी क्वेश्चन आसी जिवो कहि होबनी तो जो स्टैंडर्ड बुक्स रहिला बा आपण क्लास करूचंदी क्लास रे आपण को जोडा नोट्स देइथिबो बा जहां पढैथिबे सेइथिरु जदी क्वेश्चन आसला भूल करिवार नाही जोटा आपण पढी चंदी सेटा जदी भूल कर देले प्रीलिम तो काइंड ऑफ गैम्बल ही जाउची ना इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर अनप्रेडिक्टेबल आपण को 40 टा क्वेश्चन आसुथुबो सर्टेन थिबे आ बाकी तो गेस बार करिया पड़िबो तो सही 40 टा रु जदी आपण भूल कर देले देन यू आर लूजिंग द बैटल तो दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड एग्जीक्यूशन भूल करिवेनी टू एग्जीक्यूशन जेमती एग्जाम रे भलो होबो केमती एग्जीक्यूशन भलो आपण जदी आपनकर कामनेस कंपोजर रखिबे ताले भलो होबो
आपणकर सेठी कॉग्निटिव नारोइंग होबा कथा न आपण जत्ते कूल हेकी जिवे सेते आपनको माइंड ता स्प्रेड हेकी वर्कआउट करिवो एंड यू कैन नॉट इमेजिन आपनको माइंड पाखे एते पावर अछि आइंस्टाइन कहिले वी आर जस्ट यूजिंग 10% ऑफ आवर ब्रेन तो आपण जदी कामनेस कंपोजर रखिबे तले सेठी एग्जीक्यूशन सही एग्जाम रे एग्जीक्यूशन भलो होबो एंड सेकंड फॉर एग्जीक्यूशन इज प्रैक्टिस मॉक जत्ते देई परिबे किंतु मॉक ता दला परे से जो मार्क ता आपण सिक्योर कले डोंट टेक दैट सीरियसली सत्य सीरियस ता माने नुहे आपण सेटा छाड़ देबे जते रहिला सेमति नुहे जदी आपण खराब करचंदी देन you know your standing where you stand so that is one thing that you can gauge from the mock then आपनकर कोन को एरिया रु भूल होची से एरिया को इंप्रूव करिया को ट्राई करि परिबे तापर thirdly prelim रे गोटे one thing is about information आपन पाखरे से आंसर ओके information अछि कि नहीं तो सेटा को आपन को सॉलिडिफाई करियार अछि सेकंड इज अबाउट गेस वर्क तो अछि एंड prelim रे यू हैव टू डू सम गेस वर्क आ सेटा स्मार्टली करिवार अछि ब्लाइंडली नहीं अंधार रे बाडी उलेला भलिया नुहे हबो सेगुडा ठीक गेस वर्क रे ठीक हबो जदी आपण सेटा को ठीक से प्रैक्टिस करि के जाई चंदी एंड माने दैट हैज बीन इनकल्केटेड इनटू योर ब्लड with lots of practice then say exam hall say question गुडा को ठीक हो majority ठीक हो all you can do is increase the probability of your success तो सेटा भी मॉक रे आपनकर हबो प्रैक्टिस जते बेले करूथबे एनालाइज द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन योरसेल्फ व्हाई डिड यू गेट इट रॉन्ग was it because of lack of information जदी lack of information थला देन रिवाइज जोथरे आपनकर गैप्स अछि से इंफॉर्मेशन को सॉलिडिफाई करन बा एम्ति गोटे क्वेश्चन आसी जोडार गोटे स्टेटमेंट आपन जानि ही परिबेनी सेटा को स्टैंडर्ड बही रे नाही नॉर्मली करंट अफेयर्स रे कोठी आसी नथला तो सेटा जानि परिबेनी तो सेटा न जानि परले सेटा को इंफॉर्मेशन तो सॉलिडिफाई करि परिबेनी किंतु अदरवाइज सेटा को एनालाइज करी कि ठीक करि पार थानते कि सेटा भी पचारिबे तो सही डायरेक्शन रे क्वेश्चन को जोडा भूल हैला आपनकर मॉक रे ताको एनालाइज करंतो एंड ट्राई टू फाइंड द पैटर्न बिकॉज़ जते बेले जने क्वेश्चन ता सेट करूची ही इज आल्सो प्लेइंग ए गेम से जो क्वेश्चन गुडा को मैनिपुलेट करछन स्टेटमेंट गुडा कोन करछन स्टेटमेंट गोटे स्टेटमेंट को भूल करछन गोटे स्टेटमेंट को ठीक रखछन बेले बेले स्टेटमेंट रो आधा पार्ट को एठी आनी के विषय दोचन आधा पार्ट को ऐसे नहीं के विषय दोचन तो दे आर प्लेइंग अ गेम तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गेम आ सेटा बारंबार प्रैक्टिस कले दैट विल बी पार्ट ऑफ योर इंस्टिंक्ट सेटा मु करिथिले आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स आई एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम लाइक 20 इयर्स खाली थरे देखिदेली से आने I looked at them repeatedly so या पूर्वर मु डेली 50 टा क्वेश्चन खाली देखुतली if I know the answer then also I was looking at them ता ऑप्शन को देखुतली से लोक माने I was trying to keep myself in the shoes of the question setter से कोन केमति खेली छी से क्वेश्चंस रे ऑप्शंस गुडा केमति मैनिपुलेट करी छी स्टेटमेंट्स केमति मैनिपुलेट करी छी आपण एबे तो बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सेडा को बाहर कलेनी माने जे जेनेरिक स्टेटमेंट गुडा को जनरली ठीक थिबो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स they are generally wrong science and technology रे you have to be inclusive एमति सब ट्रिक्स अछि that you can find anywhere किंतु सेगुडा खाली थोरे पढी देले हबनी you have to practice them that's the part of your blood so that जेन क्रिकेट खेलला बेले बॉल ना आसिले आपे ते गोडोटा पडौची सेमिति किछि क्वेश्चंस रे जोटारे मे बी माने जोटा आपण जम्मा जाननानी सेडा अटेम्प्ट करिवेनी जोटा 50% प्रोबेबिलिटी बनी जाउची माइनस मार्किंग केते 1/3 तो 50% प्रोबेबिलिटी जदी बनती देन आल्सो यू हैव द एज ना अपन पॉजिटिव मार्क ही पाइबे तीनटा क्वेश्चन कला पर 50% प्रोबेबिलिटी तो सेउडा केमति मैक्सिमाइज करी हबो जदी आपण ए डायरेक्शन रो भाबियो सेटा आपनकर इंस्टिंक्ट हे जो इंट्यूसिवली आपन को जाना पड़िबो ए स्टेटमेंट ता भूल अछि पडितला धरो क्लाइमेट ट्रैकर कोन सेटा आई हैड नेवर हर्ड ऑफ इट बट इंस्टेंटली आई थॉट इफ आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट देन इट मस्ट बी एन एनजीओ इवन नो किछि गुटे बॉडी हितांता बा कोन हितांता तो मु जानि थांदी ऑब्वियसली बड़ बॉडी हितांता एनजीओ बोली तो मु जानिनी छोटिया संस्थाटा हितिबो तो दैट विल कम इंस्टेंट माने इंस्टिंक्चुअली आसी जिवो सेटा जत्ते आपण प्रैक्टिस करिवे सेटा आसीबो तो प्रीलिम रो मु फर्स्ट माने अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम फर्स्ट आपनकर बेसिक्स जो अछि सेटा को स्ट्रांग करिवे खाली गेस वर्क ऊपर फोकस कले किछि होबो यू हैव टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स फर्स्ट जो जिंस गुडा जानिबा कथा सेडा आपन को जानिबार अछि आ सेडा को ठीक करिवार अछि दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी स्टैंडर्ड बुक भल की पढिवे read between the lines then second is execution जोटा कि आपण मॉक प्रैक्टिस करिवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवे and try to keep yourself in the shoes of the question setter analyze करी कि आपनकर गेस वर्क को फाइन ट्यून करिवे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करिवे न करिवे सेटा भी केमति आपण एमिति डिसाइड करिवे सो दैट योर मार्क्स विल मैक्सिमाइज so this is all about prelim आपण तो सिलेबस जानि चंदी सोर्स जानि चंदी so I will not be going into that मु खाली अप्रोच ता ही कहबी जोटा कि आउ एबे तो बहुत सारा रिसोर्सेस अवेलेबल अछि ऑनलाइन तो यू कैन गेट ऑल दोस थिंग्स तो सेत्रे को टाइम वेस्ट करिया को चाहुनी जोटा कि मते
more marks को I was not able to clear the cutoff. Now I am clearing the cutoff by 20 more marks. But I did. I don't know whether it will work for you or everyone, but I think it will. At least the probability of you getting a very good mark will increase if you do that diligently. So previous year questions को भलो की analyze करंतु और pattern टाको study करिया को try करंतु. आउ जहाँ भी मैं कहूँची I will say कि take it with a pinch of salt. माने समस्त every individual is unique. समस्तंग पाखरे किछि strength अछि, समस्तंग पाखरे weakness अछि. तो मु जहाँ कहूँची whether that will मु कोई भी मु सब वेला 90टा ऊपर attempt करे. Necessarily आपण सेमति करिया दरकार नहीं. बहुत पिला अछन समान 70टा ही attempt करिवे कि तांकर accuracy सेति थिवो. So they will be getting very high marks. So it is up to you. आपनकर strength and analyze करिके आपण source different use करि परिवे. आपण approach को भी मु जहाँ कहूँची टिके सेटा को अलगा भलिया करि परिवे. किंतु generally this approach is like that. Approach has to be like that. तापर किंतु आपनकर personal strength and weakness अनुसार करि परिवे. What I mean is, what I am telling or anybody else is telling who has succeeded in the exam, your approach necessarily सेमति होबो बोली किछि माने नाही. Every individual is unique. So now let's move to mains. Mains रे सबु subject को आपण equal priority देबे. सबु सब्जेक्ट रो पुनी जो माइक्रो टॉपिक्स अछि सेगुडा को भी इक्वल प्रायोरिटी देबे. फर्स्ट कमिंग इनटू एसे रे कोन करि परिबे. एसे रे फर्स्ट प्रायोरिटी इज फ्लो. आपनकर एसे रे फ्लो का मेंटेन रहिबा दरकार. बेसी मेकानिस्टिक होबा कथा नुहे. सबु माने जो सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन, हिस्टोरिकल डायमेंशन जो एसरे सेंते लेखियो बो लेखंतु ठीक अछि. आई एम नॉट कंप्लीटली अगेंस्ट दैट, बट व्हाट आई मीन इज फ्लो का बेसी इंपोर्टेंट. आउ एसे इज ए फ्री फ्लोइंग थिंग. एटा नेसेसरीली आपण रूल रे ताको आबद्ध करि परिबे नाही. तो किछटा प्रीमेडिटेड रूल रखंतु. जदी एसे टॉपिक सेमिति अछि धरो वुमेन पढला, देन यू हैव टू अप्रोच इट जनरल पढिगला वुमेन एम्पावरमेंट, देन यू हैव टू अप्रोच इट लाइक दैट. सेमति सेग्रीगेट करिके लिखि परिबे. किंतु एबे जो फिलोसॉफिकल एसे पढुचे कोर्स रे कोन करिवे, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कोन करिवे. तो सेठी फ्लो ता मेंटेन रखिबा, दैट इज मोर इंपोर्टेंट. आउ एसे जतबे टॉपिक चूज करूचंदी किछटा प्रायोरिटी आपण सब बेले मन रखिवे. जे फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक वेरी वेल. जो एबे ओपीएससी रे तो एते कॉम्प्लिकेटेड नथियो. यूपीएससी रे किछटा टॉपिक थियो आपण बुझी परिवे नै. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी देन एज ए हार्स. कोन ता माने कोन बुझिबा बहुत मुश्किल. तो जो सही टॉपिक टा को सिलेक्ट करिवे जोटा आपण बहुत भलो की बुझी पारथुवे. जदी इंटरप्रिटेशन भूल हे गला आपण जत्ते भलो लेखंतु आसी कहबे मु बहुत बढ़िया लागिछि किंतु मार्क पाइबे 50. तो इंटरप्रिटेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. ऐसे जोटा बुझी परिवे सही टॉपिक टा को सिलेक्ट करिवे. तापरे सही टॉपिक टा को सिलेक्ट करिवे जोटा आपनकर हार्ट संगे टिके लिंक्ड थिवो. सपोज मोर गोटे एजुकेशन प्रति गोटे अटैचमेंट अछि. गोटे एजुकेशन ऊपर ऐसे आछि. आई विल राइट अबाउट एजुकेशन. आपनकर वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर अछि. वुमेन ऊपर लिखिवे. तो सब बेले व्हेन हार्ट स्पीक्स दैट फ्लो मेंटेन्स इटसेल्फ. That is the second priority. Third priority is आपनकर मल्टीपल डायमेंशन आपण जानि थिबा दरकार. आपनकर पाखरे सेति की इंफॉर्मेशन सेति की मटेरियल थिबा दरकार. सो दैट आपण 12-13 पेज लिखि परिवे. नहले गोटे टॉपिक एमदी चूज कले 3 पेज लिखला पर आपनकर पाखरे कंटेंट ही नाही. विदाउट कंटेंट फ्लो रो किछि मूल्य नाही. तो फ्लो कोहेरेंस ता मेंटेन करिवे, बट कंटेंट भी सेति की मल्टी डायमेंशनल हवा दरकार. तो दिस इज अबाउट ऐसे हाउ विल प्रिपेयर. कोट्स कलेक्ट करिवे. एनेक्डोट जते पाइवे कलेक्ट करिवे. एनेक्डोट माने स्टोरी टाइप रियल लाइफ हे पारे बा हमर किंवदंती रु हे पारे, पंचतंत्र, महाभारत, रामायण. तो सेही थ्रू आपण ऐसे स्टार्ट करि परिवे. गोटे स्टोरी देकी स्टार्ट करि परिवे, पोएम देकी स्टार्ट करि परिवे, कोर्स देकी स्टार्ट करि परिवे. तो these are some of the options. Then practice. अब जतले प्रैक्टिस करचंदी जेतु दुईटा ऐसे पडुची, प्रैक्टिस 2 essays at one go. काइना सेठी कोन हुए गोटे ऐसे लिखला पर आरोटा होइबा इच्छा न थाए. तो सेटा होबा कथा नुए. तो जेमते एग्जाम हॉल रे होउची मॉक्स शुड बी लाइक दैट ओनली. गोटे ऐसे लिखिवे नि, दुईटा ऐसे लिखिवे. तो ऐसे गला. कमिंग टू PS1, माने कंटेंट मिलेनी कहउचंदी. तो सेटा को एमके अप्रोच करि परिवे. फर्स्ट द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू अंडरस्टैंड द कोट जोटा देइछि. फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट बा कोट देइछि. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. तो यू कैन क्वेश्चन योरसेल्फ एंड से जो आंसर्स गुडा आसीबो दोज विल बी योर कंटेंट इन द एसे. सो फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट. सेटा पाई गोटे एनेक्डोट बाहर करिवे जोटा से मीनिंग को जस्टिफाई करूथुवो.
सपोज पढ़िथिला UPSC रे एथर म कहूची एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर यू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू हैव लर्नड इन स्कूल तो दैट इज अ स्टेटमेंट तारो मीनिंग होची जे एजुकेशन टा खाली रॉट लर्निंग होबा कथा न जेतले मल्टी डायमेंशनल होबो so that will remain that is what education is about जेतले आपनकर सर्वांगिक विकास करेबो not just about rotting some memorizing some facts then education will remain so that is the meaning of the statement so I started from the event from 3 idiots that the professor says that life is a race run fast or will lose and the protagonist says that it is all about excellence chase excellence not success success will chase you so I started from there compared them so the statement of the professor that is against true education and the statement of the protagonist that is true education so that is the anecdote I started from there I elaborated upon the meaning of the statement कि एटा कौन मीन करूछ so first is what is the meaning of the statement सेटा को आपण बुझाई देबे तापरे ताकू भाग भाग कर देबे आपण जे सेटा केमती मैनिफेस्ट होउची तर एजुकेशन फर्स्ट होउची कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन then socio emotional aspect of education then moral aspect of education skill aspect of education भाग तार मैनिफेस्टेशन केमती होउची सोसाइटी रे तापर पचारले केमती मैनिफेस्ट होउनी माने आमे सेटा केमती जस्टिफाई करूना हमर धर एबे एजुकेशनल सिस्टम रे कोन चैलेंज अछि जोटा कि एई स्टेटमेंट को जस्टिफाई करूनी सेउडा लिखले तापर फ्यूचरिस्टिक हेक लिखले जे केमती आमे एई स्टेटमेंट को जस्टिफाई करि परिबा इन आवर एजुकेशन तो व्हाट व्हाई how it is being manifested what are the challenges in the questions पचारि के आपण लिख परिबे coming to GS1 syllabus रो तो each source कहले I think it will be very time taking so सेउडा तो स्टैंडर्ड सोर्स आपण मान को सब जणा थिबो तो सेउडा बेसी मु कहिबिनी तो GS1 ने प्रायोरिटीज जोटा जनरल प्रायोरिटी कहितली सेडा तो रहिबो आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करिवे सिलेबस को कनेक्ट करिवे सही अनुसार पढिबे आउ आर्ट एंड कल्चर हे गला तो सेथिरे जेतेबेले आपण प्रीलिम्स पई पढुचंदे टिके मेन माने फैक्चुअल जिंसो मने रखिया पड़िबो किंतु जेतेबेले मेंस पई पढुचंदे सेतेबेले आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिक जिंसो गुडा को टारगेट करिवे धरो एंशिएंट मेडिएवल इंडिया रो हिस्ट्री पढुचंदे अलाउद्दीन खिलजी कहा संगे वार करथिला सेटा दैट इज नॉट इंपोर्टेंट मेंस पई जेतेबेले पढुचंदे इवन प्रीलिम्स रे भी सेउडा पकेबेनी तो सेठी आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर रे कोन हेची पेंटिंग रे कोन हेची फिलोसफी रे कोन हेची लैंग्वेज रे कोन हेची को एरिया रो समान बेसी पचारु चंते विजिटर्स कोन आछन यूपीएससी रे माने इट इज ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस कि के चाइना रो आस्थिले के अरबिया रो आस्थिले पर्शिया रो आस्थिले जो मानकर अकाउंट्स रो हम मेडिएवल इंडिया बा एंशिएंट इंडिया विषय रे जानि परछु तो एगुडा प्रीवियस क्वेश्चंस एनालाइज करी कि सही डायमेंशन रे आपण एनसीईआरटी पढंतु बा को भी स्टैंडर्ड बुक पढंतु कोचिंग मटेरियल पढंतु आर्ट एंड कल्चर पई हिस्ट्री पई तो स्पेक्ट्रम इज द बाइबल तापरे हिस्ट्री पर वर्ल्ड हिस्ट्री जदि हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखिया सेते क्वेश्चंस आसुनी तो सेटा को भी कोचिंग मटेरियल आपण पढी दियंतु जस्ट टिके बेसिक्स गुडा जानिथिबा दरकार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हला अमेरिकन रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन जोडा मेन टॉपिक गुडा सेटा बेसिक्स जानिथिबा दरकार वर्ल्ड हिस्ट्री गला पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ओपीएससी रे बधे नाही यूपीएससी रे अछि सेटा भी बेसिक क्वेश्चंस आसुनी को भी कोचिंग मटेरियल पढी दियंतु तापरे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पर सोसाइटी ता आपण प्रैक्टिस करिया बहुत इंपोर्टेंट सेटा प्रैक्टिस कले ही आपनकर आंसर सुडा काई ना सेउडा नॉर्मल जिंसो क्वेश्चंस पचारिबे कास्ट कम्युनलिज्म सेउडा ही पढिबे गोटे जागा रो कोचिंग मटेरियल रो पढिबे व्हाट इज कम्युनलिज्म आपन पाखा डेफिनेशन थिबा दरकार किछि कमेंट्री रिकमेंडेशन बा व्हाट इज द कॉजेस ऑफ कम्युनलिज्म सेमति आपन भाबिया कथा नै केबे भी गोटे जेनेरिक जिंसो अछि सिलेबस रे सपोज कम्युनलिज्म आपन जानि जंदी व्हाट इज कम्युनलिज्म तो मु कोउठु पढिबेनी मु एमति लिखिबी मन इच्छा सेमति नै कोउठु गोटे स्टैंडर्ड जागा रो सबले पढिबे तापरे निजो कथा निजो ये भी लिखिबे जोटा आपन सोसाइटी रे देखुचंदी माने व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग आउटसाइड दैट इज आल्सो ए बुक और सेगुडा को जदि आपन यू कैन फाइंड प्लेस फॉर देम इन द आंसर then you will definitely get rewarded because UPSC is or OPSC is looking for such brains जो माने practical application देखुचंदी but still आपन को स्टैंडर्ड बहिरु फर्स्ट गोटे थ्योरी टा पढिले तापर आपन प्रैक्टिकल सहित रिलेट करि परिबे तो सोसाइटी पार्ट सही बळे मटेरियल रु पढिले प्रैक्टिस करिवे प्रीवियस ईयर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा ड्राफ्ट भले लिखि दियंतु माने सब पूरा न लिखि पारले भी क्वेश्चंस लिखले एथरे मु कोन इंट्रो एंत लिखली कंक्लूजन एंत लिखली ए पॉइंट एटा चैप्टर लिखली एटा चैप्टर लिखली एमती जदी खाली करि देबा ना 20 वर्ष रो ताने यू विल बी एबल टू राइट एवरी आंसर्स इन मेंस वेरी कंफर्टेबली सोसाइटी पढेला तो ज्योग्राफी तो एनसीईआरटी वगैरह रु पढिबे आ जहां भी मटेरियल कोठु पढिले तो जीएस1 रे आपन फर्स्ट प्रायोरिटी रहबा कथा जे माने जेहेतु एटा टिके स्टैटिक ओरिएंटेड तो सब जिंसोडा केमदी भलो की पढी की कवर करिवे तापर प्रैक्टिस करिवे
आउ GS2 तापरे कमिंग टू GS2 एथिरे रहउची मेनली पॉलिटी गवर्नेंस हायर इंटरनेशनल रिलेशन OPSC रे नाही तो पॉलिटी स्टैंडर्ड बुक्स लक्ष्मीकांत तापरे जहां भी मटेरियल आपण ऐड करिवे सेतिरे किछि मेंस पई दरकार काहे कि ना मेंस रे समाने टिके एनालिटिकल पचारिवे समाने पचारिवे जे व्हाट इज द चैलेंजेस इन द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट बा पचारिवे जे पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को इंडिया रो कोन थ्रेट एबे अछि हाउ इट कैन इम्प्रूवाइज इट सेउडा तो लक्ष्मीकांत रे नाही ना सेउडा आपन को कोउटा वैल्यू एडेड मटेरियल रो ऑफ एनी रिलायबल कोचिंग इंस्टीट्यूट पढिबा को पडिबो मेंस पई जेतले पॉलिटीटा जेतले प्रीलिम पई पढुतबे दैट इज देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच क्वेश्चन जेमदी पढुचे सेही अनुसार पढिबे मेनली लक्ष्मीकांत बट जेतले मेंस पई पढुतबे यू हैव टू बी बिट एनालिटिकल कि कोन इश्यूज अछि केमती इम्प्रूवाइज कराई परिबो दैट शुड बी योर फोकस इन एनी इश्यू सो इश्यू स्पेसिफिक हो लाइक स्पीकर what is the issues surrounding the post of speaker or governor or president or parliamentary democracy तो सही मेंस पई पढला बेले भी आपण जो सब बेले निजो क्वेश्चंस पचारंदो क्वेश्चंस पचारिले ना आंसर रो फॉर्मेट ता सेमती ही हो और से प्रेसिडेंट तो फर्स्ट आर्टिकल जानिबे तो व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट तापर फंक्शंस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट तापरे आउरी क्वेश्चन पचारिबे दरे इज इट अ रबर स्टैंप एई भला ही क्वेश्चन सब आसीबो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर व्हाट आर द चैलेंजेस ता सब बेले मेंस पई जेतले पढुतबे चैलेंजेस आउ फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड से डायमेंशन नो टिके जहां भी पढुतबे भाबुतबे मु विजन GS2 वैल्यू एडेड मटेरियल पढितली दैट इज व्हाट आई फॉलोड but it's not necessary that you have to stick to that source आपन जोडा भल लागुची सेटा पढंतु again to meet that objective demand जेंते मीट होतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आउ सिलेबस वाइज आउ आपन जेतबेले करंट अफेयर्स पढुचंदी न्यूज़पेपर बी इट हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और एनी मैगजीन और कोचिंग मटेरियल तो सही थिरु भी बहुत स्टैटिक जिंस भी सेतरे आसीबो सेगुडा को आपनकर नोट्स रे ऐड कर देबे तो पॉलिटी जेतबेले पढुचंदी आपन मेंस पई पॉलिटी एंड गवर्नेंस दे शुड गो हैंड इन हैंड तो गवर्नेंस के तापर बहुत बड़ा माइक्रो टॉपिक अछि जेमने ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस से बहुत क्वेश्चन पचार देले यूपीएससी रे या पूर्वतर तो सेहुडा को भल की पढियार अछि कोउटे कोचिंग मटेरियल रो आल्सो यू कैन रेफर ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2 पूरा रिपोर्ट पढिवार नहीं समरी पढिवार अछि समरी दैट टू some माने not all the reports मु जोडा पढितली आ मते हेल्प करितला especially in the governance part that I will tell first is ethics in governance 2 citizen centric governance एगुडा को आपण कोठी भी यूज करि परिबे ए जोडा को ए रिपोर्ट गुडा जदी पढिबे तार कंटेंट को you can use it anywhere GS2 रे पॉलिटी क्वेश्चन यूज कर परिबे गवर्नेंस रे यूज कर परिबे सोसाइटी रे किछि पार्ट रे यूज कर परिबे देन यू कैन यूज इन एथिक्स आउट पढितली लोकल गवर्नेंस एति की पढले आपन को बहुत हेल्प करियो गवर्नेंस रे समरी पढिवार अछि मु पढितली जीएस स्कोर रा समरी यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड चॉइस एथिरे आपण जेतले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करिवे GS2 रे देखिवे किछटा थीम रु माने सबु बेले क्वेश्चन आसुची फेडरलिज्म सेंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन तांको भितरे कन्फ्रंटेशन केमती होउची कोऑपरेशन केमती होउची कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ए डायमेंशन क्वेश्चन आसी वही आसीबो ता भितरे भी पुनी जो स्पेसिफिक इशू अछि इंटरस्टेट काउंसिल इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट ए सब क्वेश्चन सबु बेले आसीबो be it UPSC or OPSC तो give much more importance to those segments social justice ऊपर बहुत क्वेश्चन आस्तिला मु देखुतली OPSC रे don't neglect those parts तापरे गवर्नेंस कहिली ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी NGO SHG प्रेशर ग्रुप एवडा को मटेरियल ओटे पढ देबे कोठु ना कोठु निहाती पढिबे भाबी एंजन दिन निजो को मन को लिखि देबी आउ सब बेले जहां पढुचंदी ट्राई कलेक्टिंग एज मेनी एग्जांपल्स एज पॉसिबल आपनकर आंसर्स रे जते एग्जांपल्स रहिबो जते केस स्टडीज रहिबो इट विल बी मोर मार्क फिचिंग फॉर यू तापरे आपन इंटरनेशनल रिलेशन ओपीएससी रे त नाही यूपीएससी रे दैट इज मोस्टली करंट अफेयर्स किंतु किछटा टॉपिक्स अछि लाइक डायस्पोरा
सेटा आपन को किछि स्टैटिक जारू कोई कोचिंग मटेरियल रु पढि देई परिबे। कमिंग टू GS3 रे मेन होची इकोनॉमिक्स को भी मटेरियल पढु मु श्रीराम IAS रु पढिथिली आउ किछि किछि न बुझी पारथिली जोडा नूनाल रो किछि वीडियो देखिथिली ता परे इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट करंट अफेयर्स जेतेबेला आपण करंट अफेयर्स पढुचंदी सेगुडा को धरो सपोज आज गोटे MSP आर्टिकल आसिला तो सेठी आपनकर MSP गोटे सिलेबस रे अछि सेठी आपनकर कंटेंट मिली गला फूड प्रोसेसिंग ऊपर आर्टिकल आसिला फूड प्रोसेसिंग रो कंटेंट मिली गला तो करंट अफेयर्स रो आपण बहुत कंटेंट्स पाइबे स्पेशली फॉर GS3 GS2 रे भी पॉलिटी पई पाइबे इंटरनेशनल रिलेशन पई पाइबे तो डोंट नेग्लेक्ट करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स को जेतेबेले पढुचंदी टिके स्टैटिक टिंट देकी पढंदु माने यू शुड एबल टू ब्लेंड स्टैटिक विथ करंट अफेयर्स आउ गोटे जिंस हुए जेतेबेले कोचिंग रो मटेरियल गुडा आसे GS3 रे समान सब रिपोर्ट बहुत देई दियंते विजन रे स्पेशली आई हैव सीन वर्ल्ड बैंक रो रिपोर्ट कोन आसिला EPI कोन आसिला सेगुडा पडिवनी क्वेश्चन माने मेंस रे तो पडिवनी यदि प्रीलिम रे पडिवो EPI किए दिए पडिवो एते डिटेल्स रिपोर्ट रे कोन हैला सेटा पडिवनी मेंस रे क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि हमरो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कोन होउची सपोज प्लास्टिक पोल्यूशन कोन पाई होउची हमें केमती प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करि परिया बा रिसेंटली जदी कोन लॉ आसीथिबो धर EPI रे आसिला प्लास्टिक रूल्स आसिला तो सेटा ऊपर पचारि पारे तो इट विल बी ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सेमती इकोनॉमिक्स रे समान इंटीग्रिटी के उडे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट दला से पचारिबेनी से माने पचारिबो व्हाट इज ग्रोथ व्हाट इज डेवलपमेंट डेवलपमेंट केमती सस्टेनेबल हे परिबो डेवलपमेंट केमती इंक्लूसिव हे परिबो जेमती सिलेबस लिखा हिची ना सेमती ही क्वेश्चन आसीबो आउ इट विल बी ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो सेटा को सब बेले मार्क करूथुए टिके समान मटेरियल सेही वाला देई पारंतनी जोटा की UPSC रो डिमांड सब बेले गोटा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पचारिबो व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया से गोटे पर्टिकुलर रिपोर्ट पचारिबोनी सेमती बहुत फेमस रिपोर्ट आसला MDP आसला थरे पचारथिला किंतु से गोटे ब्रॉड पर्सपेक्टिव रो गोटे जेनेरिक क्वेश्चन पचारिबो पॉवर्टी कोन पाई होउची पॉवर्टी को हमें केमते टैकल करि परिबा do you think that the schemes that is being launched by they are able to reduce poverty एमती गोटे कोन पचारिबो से गोटे स्पेसिफिक जिंस गोटे नारो जिंस पचारिबोनी से ब्रॉड जिंस पचारिबो अनएम्प्लॉयमेंट काहे की होउची अनएम्प्लॉयमेंट केमती हमें दूर करि परिबा what should be our approach एमती पचारिबो आ सिलेबस रे कोन लिखा है इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट तापरे रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लानिंग तो से जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लानिंग होय से प्लानिंग ऊपर भी क्वेश्चन आसी पारे बेले बेले आउ बेले बेले पूरा ट्रेडिशनल जिंस भी आसीबो सेउडा को नेग्लेक्ट करिवेनी करंट अफेयर्स पढु से माने सुदु पचारि देथिले रेवेन्यू रिसिप्ट हमर कोन काहे कि ना बजटिंग अछि सिलेबस रे से माने सिलेबस बाहर किछि पचारिवेनी सिलेबस जेमती अछि सेहित पई दैट इज व्हाई आई टोल्ड एनालाइजिंग द सिलेबस एंड PIQ इज वेरी इंपोर्टेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मटेरियल बाहर करंदी अपन दे डाइवर्स अ बिट फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ द सिलेबस सेटा को आपन को निजो को जज करिवार अछि तो सही पार्ट गुडा को भी नेग्लेक्ट करिवार नहीं काहे कि सेटा पचारला भी आपन सेटा यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड बजटिंग अछि माने आपन को बजट केमती होउची सेतरे रेवेन्यू रिसिप्ट कोन कैपिटल रिसिप्ट कोन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोन कैपिटल एक्सपेंडिचर कोन दैट इज द बेसिक ऑफ बजटिंग दैट यू नीड टू नो बजटिंग सिलेबस रे अछि तो सिलेबस देखि कि ईच सेगमेंट ऑफ सिलेबस आपन सेही वाला नोट्स बनै देबे तापरे एगुडा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक जिंस गला परे इकोनॉमिक्स रे कोन एग्रीकल्चर मेनली अछि एग्रीकल्चर रे देखिबे से माने क्वेश्चंस आर ऑन वेरी प्रेडिक्टेबल लाइंस जहां सिलेबस रे लिखाई छि सेगुडा क्वेश्चन आसीबो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कंस्ट्रेंट्स सिलेबस रे लिखाई छि से पकेबे व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया PDS प्रेजेंट स्टेट्स रिवैम्पिंग अछि सिलेबस रे व्हाट आर द चैलेंजेस इन PDS हाउ इट कैन बी रिवैम्प क्वेश्चन पडिबो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से अछि फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस सब कोन लिखाई एग्जैक्ट स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्वेश्चन पडितला स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग को मटेरियल में सेटा लिखाई न था स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग लिखाई नथिबो से देथिबो गोटे स्कीम कोन आस्थिबो मेगा ये पई आस्थिबो सेटार डिटेल्स रे देथिबो सेमति क्वेश्चन पडिबोनी क्वेश्चन ब्रॉड लाइन रे पडिबो आ सिलेबस वाइज पडिबो एतै प्रीवियस क्वेश्चंस को गिव वेरी मच इंपोर्टेंस तो पूरा सिलेबस रो माइक्रो टॉपिक देखिबे ईच माइक्रो टॉपिक रो आपन पाखरे गोटे गोटे पेज रो नोट थिबा दरकार सेति कि जदी करि देले इफ योर नोट्स इज कंप्लीट योर आंसर्स विल बी गुड तो GS3 रो तापरे एग्रीकल्चर गला साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्टली इट इज करंट अफेयर्स बट अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे समान बेले बेले जेनेरिक क्वेश्चंस पचारिबे बेस्ड ऑन द सिलेबस रे कोन अछि साइंस इन एवरीडे लाइफ समान पचारथिला हाउ यू कैन अप्लाई साइंस इन एवरीडे लाइफ माने एग्जैक्टली सिलेबस रो क्वेश्चंस को समान पचारछन
इंडियंस कंट्रीब्यूशन इन साइंस अच्छी सिलेबस रे समान से कई पचार थिले बहुत पचार चंदी विश्वेश्वराय कंट्रीब्यूशन पचार चंदी सीवी रमन रो पचारि चंदी आउ हिग्स बोजन रो जो से साइंटिस्ट तांको ना पचार थिले सेडा कोचिंग मटेरियल आसेनी बेले बेले किंतु सिलेबस रे जेतु अछि आपण जो माने फेमस साइंटिस्ट सेमानकर कोन कोन कंट्रीब्यूशन अछि सेडा को पढी देबे साइंस इन एवरीडे लाइफ लिखाई छि सेही ऊपर गोटे नोट्स टे कर देथिबे तापर धरो बायोटेक्नोलॉजी हे गला बायोटेक्नोलॉजी रु भी सेमाने जेनरिक क्वेश्चंस पचारिबे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बा गोटे स्पेसिफिक सेक्टर दे देबे हेल्थ दे देबे हमें बायोटेक्नोलॉजी को हेल्थ रे केमति अप्लाई करि परबे एग्रीकल्चर रे केमति अप्लाई मेन होची हेल्थ एग्रीकल्चर प्राय नानो रो भी से तो सेमिति आपण सबु सिलेबस रो माइक्रो टॉपिक चूज करके एमति नोट्स बनाई देबे ताहले आपनकर आंसर्स आपे आपे ही भलो होबो तापर रिपीटेडली रिवाइज करिवे प्रैक्टिस करिवे तो माय पॉइंट इज सबु बेले सिलेबस को एनालाइज करंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करंतु सही अनुसार नोट्स बनांतु आउ बी ए बिट ब्रॉडर यूपीएससी बा ओपीएससी रे क्वेश्चन सबु बेले ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रहबो आ जदी नारो पर्सपेक्टिव रहबो समाने गोटे बहुत ट्रेडिशनल जिंस पचारे बेले बेले सुदु आर्टिकल पचारे देबे यूपीएससी रे पढितला व्हाट आर द जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अछि सेतिरे चेक्स पई कोन अछि माने 192 रे जो चेक्स अछि सेटा कोन कोन प्रोविजन अछि कोउथिरे फ्रीडम्स ऑफ मूवमेंट को हमें कंस्ट्रेन कर परिबा दैट इज ए प्रीलिम लाइक क्वेश्चंस किंतु यूपीएससी बेले बेले पचारिबो संति पूरा ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो सो बेसी रिपोर्ट करंट अफेयर एतेरे बेसी न घंटी है कि करंट अफेयर्स पढिबे बट गोटे ब्रॉडर एंगल रु पढिबे आ जोडा अति फेमस हेतिबो सेउडा आसी पारे माने गोटे पर्टिकुलर इशू में भी पचार देई पारे जेंति पीएम गति शक्ति आसी गला दे आर वेरी बिग इश्यूज सेउडा आपण यू कैन नेवर मिस आउ किछ ट्रेडिशनल जिंसोडा को भी नेग्लेक्ट करिवेनी सेउडा आसीबो mocks re maybe they are not asking but in the real exam they will ask even very traditional questions तो ये स्थिरो साइंस एंड टेक सेमति पढले तापरे सिक्योरिटी मोस्टली करंट अफेयर्स बट अगेन टिके ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स रु पढिला को पडिबो टेररिज्म धरो अछि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ टेररिज्म हाउ यू कैन टैकल टेररिज्म माने आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग दीस आर वेरी ब्रॉड थिंग आपण जदी कहबे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ टेररिज्म एटा पर्टिकुलर इशू नुहे एटा ऑलवेज स्पेसिफिक होछि तो यूपीएससी रे मोस्टली सेमति क्वेश्चंस आसीबो सिक्योरिटी गला साइंस एंड टेक्नोलॉजी गला एनवायरनमेंट भी मोस्टली करंट अफेयर्स को भी मटेरियल गोटे करंट अफेयर्स पढ देबे आ स्टैटिक जिंस जहा अछि बेसिक्स सेउडा तो आपण पढिबे माने एयर पोल्यूशन काई होउछि प्लास्टिक पोल्यूशन काई होउछि से एस्पेक्ट्स पढिबे तापरे जीएस4 एथिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स तो जहां भी सिलेबस रे लिखाई जे बी इट इंटीग्रिटी बी इट इंपार्शियलिटी तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स माने वर्ड्स सेउडा को भल की निज भाषा रे बुझी जिवे निज भाषा रे लिखि देबे सबुरो दु तीनटा एग्जांपल देई देबे गोटे एनेक्डोटल एग्जांपल बा को गोटे बड़ लोकर गोटे रियल लाइफ एग्जांपल सेंती कर देले एमती नोट आपन घर कर देला पर थ्योरी कंप्लीट हे गला देन कीप राइटिंग आंसर्स आउ एथिक्स रे योर प्रायोरिटी शुड बी टू गिव एज मेनी एग्जांपल्स एज पॉसिबल इवन कोट्स ईच पॉइंट रे भी जदी गोटे गोटे एग्जांपल माने गोटे स्टेटमेंट लिखिबे जस्टिफाई इट विथ एन एग्जांपल इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द पेपर्स माने आंसर राइटिंग बेले आपण जत्ते एग्जांपल्स देई परिबे विल गेट मोर मार्क्स आउ एथिक्स रे इट इज मोर एप्लीकेबल जत्ते एग्जांपल्स देई पाउछंदी कोट रखंतु माने एग्जांपल्स माने रखंतु केस स्टडी गोटे माने के कोन करितला से बळा जिंस माने रखंतु आउ केस स्टडी तो ओपीएससी रे गोटे केस स्टडी बगैथिले यूपीएससी रे केस स्टडी अछि तो केस स्टडी इज अबाउट प्रैक्टिसिंग आपण को जनरल फॉर्मेट टिके जानिया पड़िबो एटा को भी कोचिंग रो देखि देबे बा टॉपर्स आंसर कॉपी आउ गोटे मु जिंस कहिदिल गोटे कहिदिल सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2000 योर गाइड आउ गोटे थर्ड जिंस योर गाइड इज टॉपर्स आंसर कॉपी आपनकर कोचिंग साइट रे से माने ऑलरेडी अवेलेबल अछि तो सेगुडा को देखि कि आपनकर तांगर स्ट्रक्चर को एनालाइज करंतु से माने केमति आंसर्स रखुचंती जे जो सब्जेक्ट रे बेसी मार्क रखिचंती सेगुडा को देखंतु सेगुडा देखले जानि परिबे आंसर्स केमति लेखा जिवो आउ कीप राइटिंग डोंट डिले इट परफेक्शन इज ए मिथ आपण जदी भाबुतबे एबे पर्यंत मोर सिलेबस कंप्लीट हेनी तो आई कैन नॉट राइट गुड आंसर्स डोंट बी शाय ऑफ दैट के आपण आंसर ला देखले ठीक अछि खराब लागुची ता परे तो इंप्रूव होबो किंतु लेखले ही इंप्रूव होबो जदी परफेक्शन पछरे रहिबे ताले आपनकर हबनी सेला माने केबे भी आपण गोटे भलो आंसर लेखि परिबेनी तो कीप राइटिंग आंसर्स आउ डोंट राइट सिंगल आंसर आई विल सजेस्ट काहेकि ना यूपीएससी रे आपण को एट स्टेज बहुत गुड आंसर लिखियो पड़े तो सब बेले आपनकर प्रैक्टिस टा भी सही बळा दरकार एटलीस्ट 1 आवर रे आपण 5टा 15 मार्क्स लेखचंदी बा 10 मार्क्स लेखचंदी सेही अनुसार टाइम डिवाइड कर देबे 10 मार्क्स टू 7 मिनिट 15 मार्क्स टू 11 मिनिट्स से अनुसार एटलीस्ट 4-5टा क्वेश्चंस लेखिले सब दिन जदी फिजिबल न होउची एट द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन बट परे जतबे टाइम मिलुची बट स्टार्ट राइटिंग माने डोंट वेट टू कंप्लीट द सिलेबस और बी absolutely thorough in your preparation that will never happen not even the just the day before the exam perfection पछर रोंदनी कीप प्रैक्टिसिंग
दिस एग्जाम इज अबाउट प्रैक्टिसिंग जत्ते प्रैक्टिस करिवे सेते भलो आपनकर आंसर सब एमति तो डेली लिखिवे तापरे इवन अपियर फॉर मॉक्स आ जतले मॉक्स देबे पूरा एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट रे देबे टाइम माने एमति गोटे एठी 15 मिनिट एक्स्ट्रा नै गली 10 मिनिट एक्स्ट्रा 15 मिनिट इज अ बिग थिंग आपन जदि एक्स्ट्रा नै जाउ जने त दबार मूल्य ही किछ नै एग्जाम तो पूरा सही भलिया स्टेज रे देबे तो दिस इज ऑल व्हाट आई हैड टू से तो एबे आपन मनकर किछि जदि कहारो डाउट थिवो आपन पचारि परिबे जो माने इंटरव्यू दबा को जाउचंती रिजल्ट बाहरियो मेंस देइचंती इंटरव्यू रे इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी किछि किछि कहबे ना एठी ओपीएससी रे माने पर्सनालिटी टेस्ट करिवेनी से माने पचारिवे ट्रेडिशनल जिंस सेटा हम हाथ रे नाही माने सेटा हियर एंड देयर सेंती हेई पारे बट व्हाट आई बिलीव हियर आल्सो इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी तो आपनकर पर्सनालिटी रे जदी ठीक अछि माने सब बेले आमे यू कैन नॉट गारंटी दैट आ 30 मिनिट रे माने पर्सनालिटी जज कर देबे बोली आमे कहि परियानी बट आवर effort should be like that कि आमे आमो पर्सनालिटी टा केमिति बेटर नोटिस करि परिबा इवन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सेमिति प्रोजेक्ट करिवा तांको आगरे जदी सत्र भी हेइ नथिबो विल प्रोजेक्ट इट लाइक दैट सो दैट दे विल थिंक दिस गाय हैज अ गुड पर्सनालिटी सो किछटा जिंस आपन करि परिबे जेमिति आपन पढिबा ऊपर बेसी फोकस दउतले इन योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन बेले सुनिबा और पढिबा ऊपर बेसी फोकस दियन स्टार्ट वाचिंग वीडियोस any discussion that is happening suppose observer research foundation no gote current affairs upre discussion hochi or any media se jo chillauthwe se media wala nuhe some learning type of discussion that is happening over the media ba ko minister कहउचंती को bureaucrat कहउचंती आपण राज्य सभा टीवी में संसद टीवी हे जाइछे संसद टीवी रो प्रोग्राम्स देखि परिबे सेठी इंटरनेशनल रिलेशन ऊपर पर्सपेक्टिव बोली गोटे ना पर्सपेक्टिव ता जनरल आसे आ डिप्लोमेटिक डिस्पैच आसे इंटरनेशनल रिलेशन ऊपर तो सही प्रोग्राम गुडा देखि परिबे लुक हाउ दे आर अप्रोचिंग ए क्वेश्चंस गोटे डिप्लोमेट बा गोटे ब्यूरोक्रेट केमिति आंसर्स दिए यू कैन नॉट बी वेरी फोर्थराइट व्हाइल यू आर आंसरिंग आपन को जहां पचरा होची यू हैव टू बैलेंस इट you have to be authentic, you have to be genuine, you have to be honest, but you have to sugarcoat a little bit so that it will sound nice एटा माने उटे एमती सड़क रे जेमती कहंदी सेमती कहबा नाही तो सेही गुडा को आपण केमती प्रैक्टिस करि परिबो आज दोस वीडियोस आ बहुत पिला हमर ओडिया मीडियम रुथिबे बट दे विल बी गिविंग द इंटरव्यू इन इंग्लिश मीडियम सो ट्राई स्पीकिंग इन इंग्लिश जहा संगरे भी डोंट हेजिटेट सब बेले हमर उटे हेजिटेशन थाए जे आजि करिबिनी एटा माने मोर तो होउनी भलो कहि पारुनी जेमती आंसर राइटिंग रे भी हुए भलो लिखि पारनी तो मु लिखिबिन काल लिखिबि कोई गड़ी जाए तो स्टार्ट डूइंग इट इंग्लिश रे कथा होंतु दैट विल हेल्प तापरे आपन को आख पाखरे जे अछंती माने जो माने सेही भलिया आपन को क्वेश्चंस पचारि परिबे तांकोठू आपन मॉक नै परिबे सपोज आपनकर ऑफिस रे के अछंती जो माने ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी रे अछंती बट नॉट नेसेसरीली ब्यूरोक्रेसी आपनकर कोचिंग इंस्टीट्यूट रे जो माने टीचर्स अछंती से माने भी पचारि परिबे तापरे आपनकर जनरल एकेडमिक बैकग्राउंड रो प्रोफेसर सोंतु जे अछंतो जहा को चिन्हि छंती यू कैन इवन टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स अबाउट ए नॉर्मल इशू सपोज से गोटे वुमेन रिलेटेड इशू अछि जे वुमेन रिजर्वेशन बिल आसिला इज इट जस्टिफाइड आमे गोटे रिजर्वेशन दे दोचु सेटा कोन गोटे टोकनिज्म सत्र वुमेन मान को एम्पायर कर दो दैट इज द क्वेश्चंस हाउ यू शुड अप्रोच इट तो एटा आपन को बापा मान को संगे डिस्कस करले भी आपन को माने योर थिंकिंग डायमेंशन विल ब्रॉडन तो कीप डिस्कसिंग अबाउट दिस इश्यूज टॉक लिसन राइट लेस माने आपन को तापरे जनरल जो जिंस गुडा अछि सेगुडा आपन को रिपेयर करिया को पड़िबो माने आपन को एकेडमिक बैकग्राउंड हला बा आपन को ऑप्शनल हला सेगुडा भी क्वेश्चन पचारिबे सेगुडा रे आपन को टिके टिके माने रिसर्च करी की हियर एंड देयर रिसोर्स कलेक्ट करी की आपन को पढी की नोट्स भी बनेबा को पड़िबो डू दोस थिंग्स बट बी सोशिएबल सब बेले आमे गोटे आइसोलेटेड जोन को पढो प्रीलिम और मेंस प्रिपरेशन रे बट इंटरव्यू प्रिपरेशन इज द ऑपोजिट ट्राई इंटरैक्टिंग विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल एंड keep discussing about these issues that can be the questions in the interview so that should be your approach au apangar hobby jaha achi dharo suppose deichanti I play cricket to cricket ro jaha statistics achi do that start watching cricket jodi dekhu nathile bi mane because if you will be lying there is a probability that you will get caught kintu seta jodi actually start kile seta ete jana padibani to dharo teaching deichanti
किंतु पढ़ो ना 4 वर्ष हेलानी go to somewhere find some connection with an NGO go there teach them because सेटा जदी रियल लाइफ रे करिथिबे ना सेठी जे कहउचंदी सत लागियो पूरा बनै की कहिले सेटा जणा पड़िबो मिछ कहउची तो जहा हॉबीज देइचंदी स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स आउ ताहारो से माने थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी पचारि पारंदी तो ट्राई कलेक्टिंग दोस फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ऑल तो इंटरव्यू रे तो या ही कहिबी आउ कहारो किछि डाउट अछि इफ confidence confidence का कितने ओवर कॉन्फिडेंस confidence ओवर कॉन्फिडेंस दीटा जिनस बहुत इंपोर्टेंट इंटरव्यू रे पोलाइटनेस आउ बीइंग हम्बल तो आपनकर पोलाइटनेस आउ हम्बल ता सब बेले होबा दरकार आपन जिबे कहिबे माने आस्क फॉर देयर परमिशन टू सिट सो तांगु नमस्कार कहिबे बा से माने जदी गुटे आपन को जिनस को माने गुटे इंफॉर्मेशन देले थैंक यू सर कहिबे तो आपनकर सही हम्बलनेस ता पोलाइटनेस ता रहिबा दरकार किंतु कॉन्फिडेंस ता केमति रिफ्लेक्ट होबो आपन जहा कहउचंदी सेटा गुटे बिलीफ रो सह कहिबे फेथ रो सह कहिबे डरिबेनी यू शुड नॉट बी अफ्रेड you should be polite you should be humble but you should not be afraid टिके तो fear रहिबो nervousness रहिबो that is very natural and they understand that but आपन गुटे माने ऊपर पड़ी की झाड़ी दे की बेसी लाउड वॉइस रे बा सेमिति वे रे कहिबा कथा नै पोलाइटली कहिबे किंतु कन्विक्शन आउ बिलीफ ता रहिबा दरकार दैट इज कॉन्फिडेंस धर आपन को गुटे आपनकर स्टैंस पचारले मते पचारिथिले ओपीएससी इंटरव्यू रे अबाउट फ्रीबीज तो whether freebies are justified मु कहली जे you can answer that questions after you have categorized what freebies are because freebies ro definition is fluid धर जने कालिया योजना हैला बा पीएम किसान योजना हैला सेटा को जदी फ्रीबीज कहबो then that is justified because that is to the underprivileged section in my opinion किंतु धर लैपटॉप फ्री रे बंटी दिया होची समस्त को तो कंज्यूमर गुड्स दे दिया होची जो मान को पाखरे तो if freebies is that and it is being given purely from an election perspective to get votes then it is not justified तो सेमती मु कहली से मते काउंटर कले जने लोग काउंटर कले से कहले ना ना फ्रीबीज सब खराब मु कहली yes sir freebies are bad but some schemes that is being launched by the government तो सेटा जदी माने एक्चुअली लोकन को अप्लीमेंट करछ देन दैट इज गुड तो सेठी जतले काउंटर होची से जहा कहले ह मारिबा नेसेसरीली नुहे माने आपन को जतले ओपिनियन पचरा होची सपोज दे सेवाने पचाले जे वुमेन रिजर्वेशन बिल ठीक ना बोल आपन कहले ठीक जस्टिफिकेशन देले तापर से कहले जे ना एटा ठीक नुहे एटा किछि करिवनी आपन संगे संगे कहले यस सर यू आर राइट सो यू लैक कॉन्फिडेंस you lack belief you lack conviction in your statement तो आपनकर जोटा कन्विक्शन थिबो सेटा you should be able to defend that semane टेस्ट करिवे बेले बेले but again जति गुटे semane नुवा इंफॉर्मेशन देले and you think that their information and their argument is valid and you are wrong you should admit it so you should semane गुटे आउटे जिंस टेस्ट करन जे whether you are trainable or not सब बेले आमे सब जिंस जानि थिबा बा हमर आजि जा ओपिनियन अछि काली सेटा ओपिनियन रहबो बोल गारंटी नै you should be flexible but you should not be flexible like water ki emti pura अति fluid होबा कथा नै but you should be flexible that should be your approach आप लिंक्स दे जोंदे तो स्टार्टिंग रे से माने दे कैन आस्क यू टू इंट्रोड्यूस इट योरसेल्फ तो सेतरे नॉर्मल आपन को ना कोठु आछचंदी कोठु ग्रेजुएशन करचंदी एबे कोन करचंदी से सब जिंस कहबे हॉबीज भी कह दे पारिबे बट माने किछि सेमिति हार्ड एंड फास्ट रूल नाही कोन पचारिबे इट कैन बी वेरी अनप्रेडिक्टेबल यू माइट जस्ट एंटर एंड दे कैन आस्क ए फिगर टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ पंचायत्स इन ओडिसा एमदी पचार दे पारंती जस्ट टू पुट स्ट्रेस अपन यू सो सेटा केबे भी प्री में आपन भाबिबेनी कोन पचारे कोन नाही एते कथा भाबिबार नाही जस्ट बी योरसेल्फ आ जहा आपनकर बैकग्राउंड आपनकर धर ग्रेजुएशन जोटो करचंदी आपनकर गां जोठी आपनकर घर जोठी बा जोठी पढुचंती सेही जागा गुडा को भल की जानंतु सेही बेसिक्स गुडा न जानिले सेटा जणा पडिबे कैजुअल यारो माने सीरियसनेस किछि नाही हॉबीज गोटा लिखि देई चंदी धर मु लिखि देई छी मोर हॉबी फुटबॉल मु जानि ने यूरो काली मैच के जितला तो दैट मींस यू आर नॉट सीरियस तो सेमती होबा कथा नै आपन को गोटे करेंट अफेयर्स गोटे फैक्ट्स पचारले बा गोटे आ गोटे किछि जिंस फैक्ट्स पचारले कहि न पारले किछि असुविधा नै
पोलाइटली से सर सॉरी सर आई डोंट नो किछि होबनी सेतरे किछि फरक पडियोनी पांचटा क्वेश्चन डोंट नो कहि देले भी किंतु आपनकर बेसिक्स जोडा आपनकर सराउंडिंग आपनकर बैकग्राउंड सेउडारू पचारले जदि न कहि पाले दैट विल पुट ए बैड इंप्रेशन कि दिस गाय इज कैजुअल एटी कम टाइम हुए इन आवर टाइम इट वाज अराउंड 15 or 20 minutes for me I think it was 20 minutes UPSC रे more than 30 minutes or 30 minutes हुए आउ UPSC रे टिके समान एनालिटिकल लाइक सिचुएशनल क्वेश्चंस एमती हिटले कोन करिवो एमती पचारंती एटी टिके बेसी फैक्चुअल पचारथले किंतु मते पचार नथले मते तो सिंपली पचारथले व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट देन दे आस्क्ड अबाउट freebies then they asked something from the optional then what a situational question भी पचारले so to me all questions were almost like UPSC but what I have heard from other guys in my batch टिके बेसी फैक्चुअल क्वेश्चन पचारंती तो सेडा किछि नै न कहि परले किछि नै किंतु बेसिक्स जिंस धर ओडिसा रो पॉपुलेशन केते जदी जाननो that puts a wrong impression तो बेसिक्स फैक्ट्स अबाउट ओडिसा एंड इंडिया सेडा जानि देबे आपन डिस्ट्रिक्ट कथा जानि देबे दैट्स इट तापर फैक्ट्स फिगर्स न कहि परले किछि असुविधा नै आउ कहार किछि डाउट इसी एग्जाम होचे अक्टोबर हम्म तो लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी अक्टोबर रे कोन अछि प्रीलिम अक्टोबर माने आउ 3 मास अछि 3 मास अछि माने माने देखो प्रीलिम्स आउ मेंस प्रिपरेशन दे शुड गो साइमल्टेनियसली किंतु 2-3 मंथ्स प्रीलिम पूर्व आपण यू शुड मूव टू ए जोन ऑफ प्रीलिम प्रिपरेशन टिके डिफरेंट थाए एबे जेंति स्टैंडर्ड बुक्स गुडा जहा अछि जेंति मु कहिली प्रीलिम रे दैट शुड बी द प्रायोरिटी लक्ष्मीकांत हला स्पेक्ट्रम हला एनसीईआरटी सेडा को भल की रिवाइज करंतु रीड बिटवीन द लाइंस जत्ते मने रख परिबे सेते मने रखंतु साइमल्टेनियसली लुक इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से माने को एरिया रु पचारुचंती सेही एरिया गुडा को बेसी टारगेट करंतु तापरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रु पैटर्न एनालाइज करंतु सो दैट आपनकर गेस वर्क इंप्रूव हेई परिबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जत्ते प्रैक्टिस करि परंतु करंतु स्टैंडर्ड बुक्स पढिबे रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करिवे आउ कीप गिविंग मॉक्स देला परे खाली मॉक्स ता देकी मार्क ता देखि देकी सेटा को फोपाडी देबेनी ताको एनालाइज करंतु कि सेटरे को क्वेश्चन ता मोर भूल हला कोन पई भूल हला हाउ आई कुड गेट इट राइट मे बी मु एमती गेस करथिले मोर एटा ठीक हेई थांदा बा ए इंफॉर्मेशन ता मु जानिलिनी काहे कि एटा तो लक्ष्मीकांत रे थिला तो सेमती एनालाइज करंतु सो दैट योर मार्क कैन इंप्रूव ए तीनटा जिंस मेनली करिवार अछि तापर माने इट इज अबाउट एग्जीक्यूशन डरिवार नहीं जत्ते माने कूल हार्टेडली जिबे प्रीलिम एग्जाम को सेते भलो होबो आज भी आई हैव नथिंग टू लूज जहा हो देखिबा बट ता माने प्रिपरेशन भलो ही करिक दिबार अछि आउ ओडिसा जिंस बहुत पचारु जंदी ओपीएससी रे डोंट नेग्लेक्ट देम जहा भाई भी तो दउथबे भलो मटेरियल सेइथुर आपण एडिशन करि परिबे जोठु होउची माने जहा सिलेबस रे लिखाई छि कोठु ना कोठु गोटे कवर करंतु एनसीईआरटी पढ़ना है एनसीईआरटी ओल्ड आई विल रिकमेंड ओल्ड एनसीईआरटी आरएस शर्मा एंड सतीश चंद्रा दोज आर वेरी गुड बुक्स ओपीएससी पाई भी यूपीएससी पाई भी सेतरो किंतु आपन फर्स्ट पढ़ले बहुत लागिवडा एडा केमती मन रखिबी रिलेट करि परिबेनी बट सेठी किए काहा को मारिथिला जेमती मु कहउतली किए कोन युद्ध होइतिला दोज आर नॉट इंपोर्टेंट आपण जदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखि परिबे जानि परिबे जे को एरिया रु क्वेश्चंस पढि परिबो मेनली आर्ट एंड कल्चर ऊपर पढिबो बा तांगर रेवेन्यू सिस्टम केमति थिला तांगर गवर्नेंस केमति थिला वुमेन मान को स्टेट्स केमति थिला सोसाइटी केमति थिला ए जिन सबडा पढिबो माने वार फॉर ऊपर एते पकेबेनी साने तो सही एस्पेक्ट रु पढले सेडा इजी हे जिवो दोस टू बुक्स आर वेरी गुड तापरे आपण टाइम होउची न होउची दैट इज अप टू यू माने व्हाट आई कैन सजेस्ट इज व्हाट इज द गुड सोर्स हेलो हेलो यस कोंतु सर एक्चुअली मु 3-4 मासला सर मु एबे 3-4 मासला प्रिपरेशन आरंभ करछि तो सर एबे मु फर्स्ट टाइम पे प्रीलिम देबी तो सर मु प्रीलिम प्लस पेन देटा पैरेलली प्रिपेयर करबी ना ओनली प्रीलिम पे फोकस करबो केमिनि प्रिपरेशन हम टिके सर गाइड कर 3 मास हला प्रिपरेशन स्टार्ट करछन एथरो प्रीलिम देबे सर हाँ एबे प्रीलिम पढ़न कहीं ना प्रीलिम मेन सेमी की बेसी डिफरेंस नहीं किंतु प्रीलिम जता पूरा क्लोज हो जिवो आ उधर 2 मास थिबो बा 1.5 मास थिबो तो सेतवे टिके प्रीलिम स्पेसिफिक पढिबे लुक मोर इनटू द फैक्चुअल काइंड ऑफ थिंग्स तापरे प्रीलिम सरी गला परे यू कैन अगेन स्विच टू मेंस मोड ऑफ प्रिपरेशन जोटे आपनकर
एनालिटिकल एस्पेक्ट्स बा ब्रॉडर पिक्चर ऊपर बेसी फोकस रहइबो ओके ओके सर आपण कोन कहउतले गुड इवनिंग सर रिवीजन स्ट्रेटजी What is that? How will we revise it and what time we do that? Like I'm using mock practice because revision the paper because UPSC prelims and the exams. My more problem is like the questions they actually statements are okay going to go to statement just because of revision go to statement like for us analysis like रिवीजन आपण जे आगुरु नोट्स करि दैथिबे नोट्स गुडा को बारंबार पढि चलिबे बा जदी नोट्स करि नाहंती एबे भी स्टिल 3 मंथ टाइम अछि तो ऑलरेडी तो आपण बुझी सार चंदी थरे दी थर तीन थर पढि सारथिबे गोटे वेदर लक्ष्मीकांत पढि सार चंदी तो जेतेबेले लक्ष्मीकांत एबे पढुचंदी आउ थरे गोटे रीडिंग मारुचंदी तो जो जिंस गुडा फ्लूइड माने जोडा भूली जिवे आपण वोलाटाइल माने किछि जिंस आमे पढले थरे पढले सेटा जीवन जाक मने रहइबो किछि जिंस थिबो फैक्चुअल जिंस जोटा भूली जिवार बेसी प्रोबेबिलिटी दैट दो यू विल बी एबल टू नो तो सेही जिंस गुडा आपण नोट्स बनै दियंतु सेही नोट्स गुडा को मझिरे मझिरे देखिबे आपण सो दैट आपण आगे स्प्लिट कर दियंतु टाइम जे सब्जेक्ट वाइज केमिति सपोज एबे 4 दिन मु एई दुटा सब्जेक्ट एकाथरे चारटा सब्जेक्ट धरले होबनी गोटे सब्जेक्ट पढुचंदी जदी एटलीस्ट आई विल रेकमेंड दैट अगेन नॉट एंड हार्ड एंड फास्ट गोटे सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 घंटा पढिया कथा इन माय ओपिनियन सो दैट गोटे मोमेंटम रहे तो तापर जते टाइम दउचंदी दिन को सेही अनुसार आपण सेतेटा सब्जेक्ट कवर करि परिबे आ एबे तो प्रीलिम पाखेलानी मे बी आपण ऑप्शनल पढु नथबे जदी ऑप्शनल पढुतबे देन यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली तो गोटे थरो 3 माने 3 घंटा मु पॉलिटी पढली तो पॉलिटी रे मे के ऑन टारगेट जे आति के आज एतिकटा मु टॉपिक सारीबे धर आज एति प्रेसिडेंट जाय सारीबे तो सेउडा आपण रिवाइज कले बहिरु तापर जदी नोट्स करिथिबे नोट्स रु रिवाइज करिवे आउ जदी नोट्स करि नथिबे जोडा को फ्लूइड जिंस सेउडा को टिके आपण नोट्स कर दे परिबे बा यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन टू अंडरलाइन दैट आई यूज्ड टू डू माने धरो फर्स्ट रिवीजन रे आई विल अंडरलाइन इन वन कलर तापर जतले सेकंड रिवीजन रे माने जोडा आउ टिके ताठू बेसी भूलिवार प्रोबेबिलिटी थियो सेटा आउट कलर आउ जोडा सबुटू भूलिवार बेसी प्रोबेबिलिटी थियो आउट कलर सो जतले मते बो पाखरे बहुत कम टाइम थियो देन आई विल बी लुकिंग ऑन टू ओनली द थर्ड फेज ऑफ अंडरलाइंड थिंग्स जोडा की बहुत ही फैक्चुअल थिबो जदि मो पाखरे टिके बेसी टाइम अछि देन आई विल लुक इनटू ऑल द अंडरलाइंड थिंग्स सो दैट यू कैन डू नले आपण नोट्स रे भी करि परिबे मु किछि किछि जिंस पई नोट्स करेनी अगेन दैट इज ए पर्सनल चॉइस जेंदी हिस्ट्री पई मु नोट्स करनथली कल्चर पई भी करनथली खाली फैक्चुअल जिंस किछि प्रीलिम्स पई करिथली जेंदी टर्म्स गुडा पढुची धर एंशिएंट मेडिवल रे सेगुडा को माने न लेखि कि रखिले मने रहिबनी तो बा टाइमलाइन ऊपर प्रीलिम्स रे क्वेश्चंस आसे तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यू कैन मेक नोट्स जोटा पई दरकार होची नहले यू कैन अंडरलाइन इन द बुक्स आउ माने धर आज पढ़िले गोटे चैप्टर सेटा एका 2 मास छाडी दियंतुनी ता परे एटलीस्ट 2 वीक परे रिटर्न टू दैट सो दैट सेटा स्टिल माइंड रे थिबो आउ थर रिवाइज हे गेलो सेटा कंसोलिडेट हे जिवो सेमती माने साइकिल करी की रिवीजन स्ट्रेटजी ता बनांदु सो दैट यू विल बी एबल टू मेमोराइज बेटर धर आज मु पढ़िली धर मु करंट अफेयर्स पढुची विजन पीटी 365 तो आज मु धर पढ़िली पॉलिटी मो पाखे मते 7टा मटेरियल सारीवार अछि आज मु पॉलिटी 3 दिन पढ़ली तापरे सबु 6टा सारिया पर्यंत मु पॉलिटी रिवाइज करिया वेट करिक रहेनी मु आउ 3टा सारला बेल को ऑलरेडी 15 दिन हे जिवनी सेते बेले मु आसे पुनी पॉलिटी रिवाइज करिया को सो दैट सेटा टिके मो माइंड रे स्टिल फ्रेश थिवो जतले मु आउ थर रिवाइज करबी पते पूरा नवा लागिवनी मु जदी पूरा आरो 6टा जाय सारिया जे वेट करिक रही गली ताले एटा आउ थर पढले पूरा आउ थर फास्ट रु पढला बेले ही लागिवो तो फास्ट रीडिंग रो किछि लाभ रहइबनी तो यू कैन मेक दैट साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ रिविजन अकॉर्डिंगली माने कि टिके फ्रेश थिले जिंसडा you will be able to revise it and तापरे consolidate हे जिवो से ऑप्शनल मेरा माने किछटा फैक्टर्स अछि जोडा आपण कंसीडर करिके सिलेक्ट करिवे फर्स्ट तो इफ आपनकर गोटे बैकग्राउंड नाही देन डोंट गो इनटू वेरी लाइक ऑकवर्ड ऑप्शनल जोडा बेसी पिला नौ नांती जोडा कन्वेंशनली कंसीडर्ड टू बी अनसेफ ऑप्शनल्स सेटा ट्रू की फॉल्स दैट वी डोंट नो यूपीएससी तो कहबो जे ऑल ऑप्शनल्स आर रिवार्डिंग आउ किंतु आमे जानिनु तो रिस्क काहे कि नवा जदी माने हमर सेमती बैकग्राउंड नै धर फिजिक्स रो मोर बैकग्राउंड नै फिजिक्स काहे नै सेमती साइकोलॉजी रो बैकग्राउंड नै मु साइकोलॉजी काहे नै मु साइकोलॉजी नै थली किंतु आई डोंट हैव अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड किंतु फर्स्ट इज सेफर ऑप्शनल गुडा नेले बेटर आपन को पई रिस्क सेते नाही ता माने नु नेसेसरली सेउडा नेबे आपनकर बैकग्राउंड गोटे रे अछि एंड
आपण भाबुचंदी जे से ऑप्शनल ले बहुत भलो करि परिबे देन नहीं परिबे तो दैट इज वन फैक्टर सेकंड फैक्टर इज आपनकर इंटरेस्ट थिके थिबा दरकार माने फास्ट रु जानि परिबेनी आपण जेमति माने मते स्कूल ले लागुतला हिस्ट्री ज्योग्राफी दे आर वेरी बोरिंग सब्जेक्ट्स देन आई डिडंट नो हाउ टू रीड दोस सब्जेक्ट्स बट यूपीएससी प्रिपरेशन कला परे मते लागला दोज आर आल्सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स बिकॉज़ आई केम टू नो हाउ टू रीड देम तो जते पर्यंत आपण गोटे ऑप्शनल जन गठु टिके पढी नांती जानि परिबेनी एक्जेक्टली आपनकर इंटरेस्ट अछि कि नाही तो जब भी बेसी कंफ्यूज होचंदे दी तीनटा ऑप्शनल भितरे टिके गोटे दिटा क्लास जनकर एबे तो फ्री रे भी मिल जाउची क्लास कर दे कि देखि परिबे बा तार टिके मटेरियल देखि दे परिबे जे सेटा आपन इंटरेस्टिंग लागुची ना नाही तार सिलेबस केमदी अछि स्टडी करिवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमदी अछि तो इंटरेस्ट इज वन थिंग आउ अनकन्वेंशनल ऑप्शनल गुडा ननेले बेटर किंतु दरकार पड़ले नहीं परिबे आउ रिवार्डिंग हितवा दरकार माने इन नो कन्वेंशनल सेंस अगेन nobody knows whether that is true or not whether anthropology is really rewarding or all optionals are rewarding that you don't know but generally anthropology PSIR sociology those are considered to be rewarding optionals and this time geography as well so these are the few factors आउ आपनकर aptitude केमिति अछि माने समस्तंगर ओटे bent of mind थाए कार माइंड ता टिके एनालिटिकल थाए will be do good in scientific subjects माने पूरा साइंस नले भी सब साइकोलॉजी इज ए सोशल साइंस किंतु सेतरे ओटे साइंस टेंड अछि तो धर मोर टिके एनालिटिकल अप्रोच अछि मु इंजीनियरिंग पढी छी तो साइकोलॉजी आई स्टार्टेड एन्जॉयिंग सोशल मु फिलोसॉफिकल पिलाते नुहे तो मते फिलोसॉफी में भी भलो लागिवनी तो सेही जिंस ओडा को भी टिके कंसीडर करिया कथा तो स्कोरिंग हेतिवा दरकार द कन्वेंशनल सेंस this is not माने पूरा निहाती जे हवा सेटा हवा दरकार सेमति नुहे you can also take concept optionals आपनकर जदी सेमिति अच्छी बैकग्राउंड बा आपण रियली भाबुचंदी भलो करि परिबे आउ सेकंड थिंग इज योर इंटरेस्ट एंड योर एप्टीट्यूड आपने देखिबे टिके माने सब ऑप्शनल टिके स्टडी करिवे सिलेबस टिके माने सब गुडा नुहे जो तीन चारटा भितरे कंफ्यूज होतुवे तार प्रीवियस क्वेश्चंस देखिबे जदी हबो पॉसिबल हबो गोटे दिटा क्लास भी देखि देबे तापरे डिसाइड सर हां ऑनलाइन रो जने पचार दियंतो हां ऑनलाइन रो पचार के पचार गुड इवनिंग सर सर मु शाश्वत सर एक्चुअली लास्ट टाइम ओपीएससी मेंस देली आउ सर बोलो जाय नथले ते इतर भी यूपीएससी सर प्रीलिम्स से 86 87 रखतले तो हेलानी कट ऑफ क्लियर तो सर फोर्थ अटेम्प्ट थिला एटा तो सर कोन कहउतली मोर भी साइकोलॉजी ऑप्शनल सर पचारे बारथिला कि साइकोलॉजी आपण मु अन एकेडमी रो पढी छी सर किंतु एबे आउ सेते अवेलेबल नाही तो आपण माने कोउठु पढिथिला टेस्ट सीरीज केमती माने प्रिपेयर केमती करथिले सर काने मोर लास्ट ओपीएससी मेंस रे माने ऑप्शनल बहुत ही खराब हेची तो सेति पई सर पचरथिले थैंक यू psychology on academy I don't think that is that reliable staying माने telling honestly कहीं ना जाना नहीं का को के कौन टीचर मुकुल पाठक सर भलो टीचर तो तांको मटेरियल भलो ही थाए बट अगेन वन थिंग सीए टिके पुराना जमाना रा टीचर तो सी तांको सेते अपडेट करी नांदी नि जगो बट अगेन साइकोलॉजी रे देयर इज अ डेप्थ ऑफ इन्फॉर्म माने सोर्सेस बेसी पिला दउ नांदी बेसी पिला पाउ नांदी सेति सेमिति टीचर भी नांदी बीट इन दिल्ली ओडिसा तो छडा दिल्ली रे भी नांदी खाली मुकुल सारी पढौचंदी आ एबे एमति नुवा पिला किछि आसी कि पढौचंदी तो सेमिति टीचर नांदी तो दैट इज ए डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग साइकोलॉजी सेमिति आपन को सोर्सेस मिलिबनी बट यू कैन रीड मुकुल पाठक सर्स नोट्स सेथिरे आपनकर अंडरस्टैंडिंग पूरा भलो की डेवलप हे जो इज अ वेरी गुड टीचर से खाली निजो को अपडेट करना एते इन द रिसेंट टाइम आगो जमाना रु जहा थिला नोट्स सेटा ही चली छी बट अदरवाइज दोज नोट्स आर वेरी गुड आपनकर अंडरस्टैंडिंग पूरा भलो की डेवलप हे जो मुकुल सर को नोट्स पढले तांगर ऑडियो भी आसे अवेलेबल हुए फ्री रे बता अछि और यू कैन एनरोल इन हिज कोर्स एज वेल आउ तापरे मुकुल सर को ये रु पढी सारी की बुझिला परे आपण साइमल्टेनियसली एनसीईआरटी रो दीटा बही आउ रोबोटे बारन रो बही पढिले सेथिरु आपन को जो वैल्यू एडिशन हे जो मुकुल पाठक सर को नोट्स ऊपर वैल्यू एडिशन जोड़ा भी आपन को आंसर रे लिखिबे ए तीनटा सोर्स ही मु रेफर करथिली मुकुल पाठक सर क्लास जॉइन करथिली आउ बारन आउ एनसीईआरटी तापरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुडा ऑलमोस्ट रिपीट होबो सेउडा को भल की पूरा लिखि देबे आउ पेपर 2 पई स्मारक स्वयं अप्लाइड साइकोलॉजी दैट इज अ वेरी गुड बुक सेथिरु रेफर करिए प्लस टिके टिके आपन को गूगल सर्च करिया को पड़िबो जहा भी सिलेबस अछि धरो जेंडर साइकोलॉजी हे गला
बा ग्लास सीलिंग एमती जिंस सेगुडा को गूगल सर्च करके आपण यूनिक जिंस केमती आपनकर एग्जाम रे लिखि परिबे सेटा करिया पड़िबो मोर यूपीएससी रे बहुत भलो मार्क नथिला साइकोलॉजी रे किंतु ओपीएससी रे आई थिंक क्वेश्चंस आर ऑन वेरी ट्रेडिशनल लाइंस से माने ट्रेडिशनल लाइंस रे थियोरेटिकल क्वेश्चंस पचारिबे एंड आई गॉट वेरी हाई मार्क्स इन साइकोलॉजी माने सही इयर साइकोलॉजी रे परफॉर्मेंस देखा जो आई गॉट मोस्ट प्रोबेबली द हाईएस्ट मार्क और ओपीएससी पई आई थिंक मुकुल पाठक सर नोट इज बेस्ट कहीं से पूरा जमती माने एकेडमिक पर्सपेक्टिव रो लिखाई था स्कूल पिला को जमती पढ़ांती सेमती लिखाई छी आ ओपीएससी रे सेमती क्वेश्चन पडिबो आपण सेउडा को जाकी थोई देबार अछि आ यूपीएससी पई किंतु टिके एडिशन करिया पडिबो रॉबर्ट पैरन पढिया पडिबो एनसीईआरटी पढिया पडिबो आ गूगल वगैरह रो टिके सर्च करिक भी अलगा जिंस ऐड करिया पडिबो स्पेशली फॉर पेपर 2 आ पेपर 2 स्मारक सही थैंक यू सो मच सर सर लास्ट कोई पॉसिबल आपण जदी टेलीग्राम आईडी की किछि मेंशन करि परिबा आपण कांटेक्ट करिया पे एटा बहुत हेल्पफुल होबा सर टेलीग्राम चैनल तो मु करिनी presently you can reach out to me on Instagram BISWAJIT PANDA 959 you can message me jodi I will study your seriousness मु आपन को क्वेश्चंस रो जज करि परिबी जे हाउ सीरियस यू आर आ आपन को निजरो ग्राउंड वर्क करिसंती कि नाही मोर सबु बेले मु पिलान को कहि जे माने डोंट बी इन एन ओब्लिवियन कि सीए पाई जाई जंदी मु तांको पाको पळेबी सीए गोटा देई देबे गुरु मंत्र मु सेटा कर देले पाई जेबे दैट्स अ मिथ हमु जदी सेटा भी आपन करि देली दैट विल नॉट हेल्प यू सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट आपन निजरो ग्राउंड वर्क करिवे आजकल सब ऑनलाइन अवेलेबल अछि आपन सिलेबस बुझिले बा गूगल सर्च कले अन्य कार ब्लॉग देखले कि कोन कले माने आगे निजे जति करिया कथा सेति की कला परे आपनकर किछि भी डाउट हला यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम डायरेक्टली मैसेज मी एंड if I consider that it is a serious question and you have done your groundwork I will definitely reply sure sir thank you sir thank you ha pacharanu eta I will take this as a last question I think there is a paucity of time pacharanu सेमिति नेसेसरीली नहीं धर पड़िला व्हाट इज पड़ला गोटे क्वेश्चन सपोज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर लक्ष्मीकांत रे गोटे डेफिनेशन लिखा हिथिबो बेसिक स्ट्रक्चर रो आ कोचिंग मटेरियल भी लिखा हिथिबो पूरा छापी के आसले किछि असुविधा नहीं मार्क पाइबे बढ़िया मार्क पाइबे किछि असुविधा नहीं निजो वर्ड रे लिखियो डेफिनेशन दे गोटे डेफिनेशन ना निजो वर्ड रे लिखियो किछि नेसेसरी नहीं डेफिनेशन हैज टू बी लाइक ए डेफिनेशन आ जोडा कि ऑलरेडी बही रे अछि बा कोचिंग वाला सेटा ऑलरेडी सुंदर करिक लिखिचंदी तो सेउडा रे किछि प्रॉब्लम नहीं सेउडा आपण सेठी जहा लिखा हिछि धर पडिला होछि how you can deal with ensure the impartiality of the speaker तो लक्ष्मीकांत रे पॉइंट करिक लिखा हिछि बहुत गुडा पॉइंट आपण सेउडा पूरा छापी के आसले किछि प्रॉब्लम नहीं यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स केते बेले कहा जाय जे निजो वर्ड रे लिखिबे माने किछि निजरो जिंस आपण आंसर्स रे ऐड करिवे व्हिच विल मेक योर आंसर्स यूनिक सबु जदी सबु जोटा लिखुचंदी खाली से गुडा लिखले ताले सेते आपन को भलो मार्क मिलिबो ने एवरेज मार्क मिलिबो दोस थिंग्स यू हैव टू राइट डेफिनेटली जदी आपन यूनिक जिंस लिखि कि जोटा बेसिक जिंसटा मिस कले ताले आहुरी कम नंबर पाइबे किंतु आगो बेसिक जिंस गुडा लिखिबे तापरे राइट समथिंग व्हिच इज योर ओन आपन कोठु गोटे कलेक्ट करचंती गोटे एग्जांपल कलेक्ट करचंती बा आपनकर रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग रो भी बहुत जिंस लिखि होबो माने आपन जोटा ऑब्जर्व करचंती सोसाइटी रे जोटा देखिचंती सेटा को आनी लिखि देबे कोठु पढी नांदी सेटा तो सेमती गोटे जिंस कोन लिखि परिबे बा किछु गोटे कमेंट रिकमेंडेशन एमती करके आंसर्स टा को यूनिक करिवे इट इज नॉट लाइक दैट इट हैज टू बी योर ओन वर्ड्स सेमती किछ नहीं बुझले सर गोटे लास्ट क्वेश्चन सर हां पचार सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर हायर स्टडीज कंप्लीट कला पर सर बिना किछि जॉब जॉइन करिके सर प्रिपरेशन करथली सर वाइवा रे सर सेटा किछि नेगेटिव इंपैक्ट पकेबो कि सर आफ्टर कंप्लीटिंग हायर स्टडीज आइडल बसी की प्रिपरेशन करबा सर 2018 रे सर किछि आप करिसन मु 2017 में रिजाइन कली 2017 आई केप्ट ऑन राइटिंग दिस एग्जामिनेशन फॉर नियरली 6 इयर्स 2024 जाय मोर से किछि कम मार्क आसी नथिला माने टिके कम आसले बट दैट इज बिकॉज़ ऑफ अदर रीजंस व्हाट आई थिंक तो आपनकर कन्विक्शन अछि मते सिविल सर्वेंट हबार अछि आईएएस हबार अछि
तो सेति पई मु एग्जाम दउची सेटा कन्विक्शन रो सह जदी कहि देले सेटा को डिफेंड करि देले किछि असुविधा नै सर एटा एप्रोप्रिएट आंसर हबो सर जे केवल सिविल सर्विस पई ही इंक्लाइंड अछि तो अन्य किछि जॉब अप्लाई कलेनी हां ठीक अछि सर आई वांट टू जॉइन द सिविल सर्विस that is I want to give my best as long as I can जते पर्यंत करि परिबे सेते पर्यंत हम करिया को चाहू छी so that is why I left the job and I want to give my heart out for this Thank you, sir. गुड इवनिंग सर सर हमें आंसर राइटिंग रे तळे रेफरेंस लिखि परिबा जेंति कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन माना करे सब रेफरेंस लेखु को सोर्स नै छु सर एटा अप्लाई करि हबो रेफरेंस लिखि परिबे ए भला जिंसर जो बहुत रिनाउंड एजेंसी धर गोटे डेटा लिखुचंती गोटे किछि भी ग्राफ देउचंती सेडी ओईसीडी लिखले किछि असुविधा नै इकोनॉमिक सर्वे लिखले किछि असुविधा नै वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिखले किछि असुविधा नै तामान नुए जे हिंदू लिखि देबे सो इट्स लाइक दैट बा गोटे कोचिंग रो लिखि देबे कि कोन कि बही री लक्ष्मीकांत लिखिबे कि सेमदे लिखिबेनी जोडा बहुत रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन ओईसीडी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड बैंक धर यूएनईपी एवडा लिखि परिबे एवडा लिखले भलो एज मिलिबो आ सर नमस्कार हां कोन तो नमस्कार सर सीसेट पई किछि कोहंतु सीसेट सर बहुत कम मार्क रहै छै सीसेट इटा पर्सनली किछि करि नथिली आई नेवर प्रिपेयर्ड फॉर सीसेट सो मु एते कहि परिबिनी किंतु कहली आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुडा प्रैक्टिस करंतु कॉम्प्रिहेंशन भी आ क्वांट भी आ क्वांट रो जो बही अछि किछटा जेंदे आरएस अग्रवाल दैट इज अ फेमस बुक तो सेही थ्रू प्रैक्टिस करंतु आ जो माने सीसेट एग्जैक्टली प्रिपेयर करिसंती टेलीग्राम रे आई थिंक बहुत पाइ जिवे यूट्यूब रे पाइ जिवे जो माने देइथिवे एग्जाम आ सीसेट संकर एते भल कि क्लियर होनथुव से माने वर्कआउट करी कि करितबे सेमति कहार ओटा टिके देखि दियंतु मु जति कि जानि कि आरएस अग्रवाल पिला करंती आ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करंतु मु तो निजे प्रिपेयर करिनी सेट टाइम एग्जैक्टली कहि परिबिनी आज्ञा थैंक यू सो मच ठीक है सर से जो टॉपर्स आंसर कॉपी को साइड रो मिलिबो सर जो समाने एग्जाम देइथिबे जो थुरा मार्क्स देइथिबे तांकर वेबसाइट रे मिलि जिवो जेमते मु लास्ट टाइम फोरम रे देइथिली तो फोरम रे माय आंसर्स कॉपीज आर अवेलेबल ता पूर्व विजन रे देइथिली सब क्लियर हि नथला तो सेटा देइ नथिबे फोरम रे मोर अछि सेमते विजन रे जे मॉक देइथिबो विजन रे थिबो तांकर विजन फोरम रे मैक्सिमम दियंदी तो सेइथरे पाइ जिवे यूपीएससी रो सर नमस्कार सर सर इन ओपीएससी रो हमर एठी जा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अछि भाई को जा टू नै जिवे आ देखिबे आ सर नमस्कार सर हेलो माने बुझी पर नांती से कहली आपन को कोर्स बहुत गुडा मने रखिया पड़िबो कोर्स माने टॉपिक वाइज धरो वुमेन ऊपर मु पांचटा कोर्स सब गुडा सिमिलर टाइप होबा कथा नै काहेना वुमेन भीतर भी डिफरेंट टाइप रो एस्पेक्ट्स आसी परिबो तो को एस्पेक्ट आसले मु को कोर्टा देबी तो वुमेन ऊपर मु पांचटा कोर्स मने रखिली तापर लीडरशिप ऊपर पांचटा कोर्स मने रखिली एथिक्स ऊपर पांचटा तापर आपण भाबंतु आउ जहा भी हे गला एनवायरनमेंट ऊपर क्लाइमेट ऊपर जस्टिस ऊपर डेमोक्रेसी ऊपर जहा भी हे परिबो तो सेवडा ऑलरेडी कोचिंग एबे बाहर कर दउचंदी तो कोर्स गुडा को मने रखिबे एनेक्डोट भी सेवन दे दउचंदी किछि आपण निजे करबा नै आज काली सब रेडीमेड अछि आपण बागरा अवेलेबल खाली यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम एंड इंप्लीमेंट देम तो सेवडा को मने रखिबे आउ निजे भी टिके टिके कलेक्ट करिवे आपण पेपर पढुचंदी पेपर रे बहुत जिंस आस्तो जोडा कि आपण आंसर रे लिख परिवे एसए रे लिख परिवे तो कलेक्ट देम तो सेवडा को आपण जत्ते एबे टू कलेक्ट करि रखि दिबे आ सेवडा को डेली डेली करिया ट्राई करंदु माने एसए थिबो काली जदी आपण 5 दिन पूर्व कले सेवडा माने रहिबोनी एवडा लॉन्ग टर्म जिंस माने कोर्स भाबंतु 200 टा माने रखिवे तो सही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रे कले माने रहिबोनी आपण डेली दीटा कोट माने रखले सेतलु आपण बहुत कोट माने रखि पाथिबे आउ एनेक्डोट आपण ऑलरेडी बहुत जानि थिबे आपण जोटा आपण बोले इंग्लिश थरो ओडिया रे तो जानि थिबे धरो श्रवण कुमार रो स्टोरी श्रवण कुमार रो स्टोरी जानि जंदी तो गोटे पेरेंट्स बा गोटे डिवोशन रो कथा आसिला तो सेटा देई पर सेटा खाली इंग्लिश रे लिखिबार अछि तो आपण ऑलरेडी स्टोरीटा जानि जंदी तो सेटा इंग्लिश रे केमदी फ्रेम करिवे सेटा कोचिंग रे धरो देई चंदी कि मटेरियल बा आपण मारी देले गूगल रे द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार सेटा इंग्लिश रे आसी दियो ना तो सेठु आपण ये करि परिवे डेवलप करि परिवे गोटे क्वेश्चन प्राय समस्त रहउछि जो फियर ऑफ फेलियर रहउछि जे ए एग्जाम ता अनसर्टेन एग्जाम तीन तीनटा
स्टेज रे इच स्टेज रे माने फेल लेवल चांस अछि प्रीलिम पास कला पर मेन गला पर इंटरव्यू रे घटिबार अछि तो ई फियर ऑफ फेलियर को हमें केमिति हैंडल करबा तो ता पई केमिति कोन हमर पिला माने गोटे मोटिवेशन रहबो कारण पिला जो माने कि सपोज गोटे दिथर फेल होला पर दम सपोर्ट मिले जेमति बहुत जो फैमिली थांती कि नै तमे कोऑपरेट करम आउ किछि देखो ना एटा गोटे एते हार्ड एग्जाम एटा नै तमे आउ को छोटा एग्जाम देखो जोतिरे किछि माने डिस्ट्रैक्ट होबा स्टार्ट करे तो सेही गुडा सिचुएशन में केमिति हमें हैंडल करबो और केमिति एटा को हमें मोटिवेशन दा सब बेले मोटिवेशन दा बाहर आसेनी मोटिवेशन दा भितरु आसीबो तो आपनकर जदि सही बिलीफ आउ कन्विक्शन अछि कोन पई से जर्नी टा स्टार्ट करिथिले व्हाई आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड व्हाट इट मीन्स टू मी आउ धरो फर्स्ट टाइम रही गला ठीक अछि जदि हेलानी दी तीन थर देई कि हेलानी तो सेते बेले पर्यंत आपन कोन देई सार चंदे से प्रोसेस पई व्हाट यू हैव डिवोटेड तो 2 वर्ष मु ऑलरेडी 3 वर्ष कष्ट करलिनी आउ कोन 2 वर्ष करि परिबिनी तो तापरे नहेला अगला कथा तो सही जो काहे कि से जर्नी टा स्टार्ट करिथिले आउ आपन काहे कि से सर्विस को जिबा को चाहू चंदी जो भी ओडिशा सिविल सर्विस हो बा सेटी आईएएस हो आईपीएस हो जोथि को जिबा पई चाहछन सेटा रीजन दा कोन माने सब बेले मु भाबे दिस इज जस्ट अ मीन्स दिस इज अ मीन्स टू एन एंड से एंड टा उडा हायर देन सेल्फ आपनकर गोल अछि एम्बिशन अछि से एम्बिशन टारे से कन्विक्शन बिलीफ फेथ जदि थिबो ताल इट विल मेक यू कैरी ऑन तो सेटा डेवलप करिवार अछि गोटे हाफ अटेंडली प्रिपेयर करिवार नाही आउ माने धरो मु दीथर देली हेलानी मु जो कहउतली इफ यू स्टार्ट एन्जॉयिंग द प्रोसेस ताहले आपण कैरी करि परिबे से प्रोसेस टा को कैरी करि परिबे सब बेले माने मते धरो माने सक्सेसफुल हेकी मते सते बेसी खुशी लागिलानी आई हैव बिकम लाइक दैट माने मते खुशी रे बहुत बहुत इलेटेड हे जिबिनी आई एम हैप्पी बट आउ फेल्युअर रे भी मु सते डिसअटेंड हेबिनी अला नीरज चोपड़ा को भी मोदी कहते फेल्यूर को कभी दिमाग में बैठना न दो और सक्सेस को दिमाग में चढ़ने मत दो तो दैट शुड बी योर अप्रोच यू शुड बी इन द प्रोसेस सब बेले एंगेज्ड रहिबार अछि आपण लुक इनटू द प्रेजेंट धरो आज प्रीलिम रिजल्ट बाहरी गला मोर मेंस फाइनल रिजल्ट बाहरी गला हेलानी हां ठीक अछि आज खराब लागियो बट द नेक्स्ट डे माय फोकस शुड बी जे मोर 6 दिन पर प्रीलिम अछि तो व्हाट शुड आई डू टुडे तो से प्रेजेंट टाको यदि आपण फोकस करिवे से प्रोसेस टाको फोकस करिवे देन यू कैन कैरी ऑन आउ जहां आसुची ग्रेसफुली एक्सेप्ट करंतु माने डोंट ग्लोरीफाई सिविल सर्विसेज दैट मच दैट इज माय व्यू पर्सनल व्यू माने सेटा आपण एम्बिशन माने बहुत बड़ा एम्बिशन आउ सेटा को आपण सेति इंपोर्टेंस देबा कथा बट सेटा को माने एमती देखिया कथा न जे सिविल सर्विस जदी न हे गला न हला आई एम डूम आपण बेस्ट एफर्ट देबे सेटा को से एम्बिशन टा को बहुत हाई रिगार्ड्स देबे बट नॉट कि सेटा न हेले मु डूम नै गले देयर आर वेरियस अदर कैरियर अपॉर्चुनिटी एज वेल आउ बहुत लोग एटा मु बहुत इजीली कहि दउची मे बी बिकॉज़ मोर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नथिला बहुत पिला थिबे तांगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थिबो फैमिली रे सपोर्ट कोन नथिबे इन दैट केस यू कैन बी मोर प्रैक्टिकल आउ गोटे जोथरे आपण आउ गोटे जिंसो करी कि जोटा कि आपण को किछि इनकम दबो एंड साइमल्टेनियसली यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और ओपीएससी सेमती आपण बट दैट इज अगेन अप टू यू सब माने इंडिविजुअल टा ऊपर ही डिपेंड करे आपनकर सही बिलीफ फेथ कन्विक्शन कॉन्फिडेंस जे हां दिन ना दिन मोर हबो न हेले भी आई थॉट आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट वन डे आई विल क्लियर इवन इफ आई डोंट क्लियर आई विल डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ आई नो दैट तो सही अप्रोच रहिले यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज my blessing my wishes are with you that you become successful in civil services but more so in life गोटे क्वेश्चन होचे जे वर्किंग प्रोफेशनल होछ जेंते आपण ऑलरेडी गोटे टीडीएस जॉब रे छिले जे ओएस रा सिविल सर्विस क्रैक करला पर डेप्यूटी कलेक्टर थे ते बिजी शेड्यूल भितरे दैट टू यूपीएससी गोटे टॉपमोस्ट एग्जाम को क्रैक करबा तो ता पे जो माने वर्किंग प्रोफेशनल लोग से माने केमिति डिवोट करि परिबे आ पई कोडी मोटिवेशन लागे कि नहीं यार मु तो मैक्सिमम टाइम जॉब रे दोच मो पई सफिशिएंट टाइम नहीं तो से तांको पई आपनकर कोन फर्स्ट होची आपनकर वर्क करी के आसिला परे पढिबा पई गोटा मेंटल फैटिग होबो गोटा फिजिकल फैटिग होबो तो आपण सेति के डिवोटेड सेति के मोटिवेटेड जदी थिबे सेति के फैटिग हेला परे भी पढि परिबे तो फर्स्ट सेति की मोटिवेशन निज भितरो आनिवार अछि जे एटा मु इच्छा करिछि माने दिस टाइम आई हैव टू डू इट एनी हाउ तो डू भादिले ही आपण माने दिन को माने वर्क परे आहुरी 5-6 घंटा देई परिबे
तापरे आपन को केमिति 5-6 घंटा बाहर करिवे तार बाट खोजिया पड़िबो बहुत जिंस करिया पड़िबो माने देयर आर सेवरल फैक्टर्स यू हैव टू बी गुड टू योर बॉस सो दैट आपन को से सते हैरान करिवेनी आपन पढ़ी परिवे तापरे सेवडा भी माने पर्सनल मैनेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ माने एनी प्रिपरेशन कहे मु सब से ताई कहे इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड लेस सो अबाउट एप्टीट्यूड तो सेटा केमति करिवे तापरे जत्ते बेले भी आपन को टाइम मिलुची सपोज आपण ऑफिस रे बसचंदी एबे किछि काम नहीं फाइल नहीं तो इन दैट टाइम आई कैन मे बी वॉच ए वीडियो और मते धर मु ऑल इंडिया रेडियो रो सुनुची किबा राज्यसभा टीवी रो जोटा पई मोर बेसी बहुत कंसंट्रेशन दरकार नहीं माने प्रिपरेशन रे बहुत जिंस थाए जोटा पई बेसी कंसंट्रेशन दरकार नहीं बट सेटा प्रिपरेशन रे करिया को पडियो एंड दैट विल बी हेल्पफुल तो सेही जिंस उडा सेही टाइम रे आपण करि परिबे तो तापरे माने जॉब माने सारी की धर 4टा बेले फेरिले तापरे आपण 4-5 घंटा तो राति रे रहउची सेही टाइम रे देई परिबे मेन इज मोटिवेशन केमने आपण निजो को माने मोटिवेटेड रखिबे जदी माने से क्लैरिटी थिवो गोल रे जे मते एटा ही करिवार अछि कन्विक्शन थिवो देन यू कैन फाइंड वेज फॉर दैट आउ स्मार्टली करिया को पड़िबो माने यूपीएससी पई 8 घंटा परिश्रम 15 घंटा परिश्रम दरकार नाही इफ यू विल डू इट स्मार्टली स्मार्टली होची केमति करिवे जोटा फर्स्ट मु कहितली सिलेबस आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेटा जदी एनालाइज करिवे यू विल कम टू नो दैट सिलेबस इज नॉट दैट वास्ट as we consider it to be आपन को अप्रोच ता बहुत क्लिनिकल एंड स्ट्रेटेजिक होबार अछि जो एरिया रो क्वेश्चन पचारुचंती जो डायमेंशन रे क्वेश्चन पचारुचंती मु सेही एरिया रो सेही डायमेंशन में पढिबी मु सब जिंस काहे की खालटा अननेसेसरी पढिबी हमर फाइनल क्वेश्चन रहइबो जे तो ओडिसा रे बहुत पिला अछंती जो माने कि रूरल एरिया रे एमति नै कि दिल्ली जाई परिबे कि भुवनेश्वर आसी परिबे तो सेल्फ प्रिपरेशन अपन एमति कहले कि ए सिविल सर्विस ओटे एग्जाम होची जोतरे 99% पिला रे एफर्ट होची कोनोसी कोचिंग सेंटर वाला जण सिविल सर्वेंट करै परिबे नै ओनली 1% रो एफर्ट रहइबो गाइडेंस रहइबो एटा रहइबो तो जो ओडिसा रो पिला माने परीक्षा दउछन जो माने कि ओटे सिटी भितर को आसी परिबे ड्यू टू फाइनेंशियल कांस्टेंट हो कि अदर सोर्स हो तो सेही पिला माने पई आपनकर कोन सजेशन रहिबो जो माने कि आगामी दिन रे सिविल सर्विस प्रिपेयर करछथि तांका पई कोन मोटिवेशन और सजेशन सेमान को पाई मोर सजेशन रहइबो जे फर्स्ट तो भाबिबार नाही जे मु दिल्ली जाई पारुनी भुवनेश्वर जाई पारुनी सो मो पाखरे स्कोप नाही सेमति भाबिबार नाही मु पढिची मेंस पूर्वर भी पढिची गोटा मयूरभंज रो सरत बोली जगह अछि सेठी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी न थाए न्यूज़ पेपर भी आसीबो कि नाही ठीक नाही से बस रे कोदिन आसीबो कोदिन न आसीबो मु भी पढिची मो बड़ भाई भी पढिचंदे हु इज इन इंडियन रेवेन्यू सर्विस तो सेमति जगह भी पढि गई परले तो सेटा फर्स्ट भाबिबार नाही आउ एबे दिस इज द टाइम ऑफ डिजिटल इंडिया एबे सब ऑनलाइन अवेलेबल अछि एवरीथिंग आ मोबाइल तो माने कहा पाखरे भी जत्ते गरीब होइतले भी एबे ता पाखरे मोबाइल अछि इंटरनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्राय सब आडे आसी गलानी तो मोबाइल ले तो सब अवेलेबल अछि आ पायरेटेड भी तो सब जाउची आई शुड नॉट से इट सॉरी माने फ्री रे भी मिली जो आपन को बहुत जिंस मिली परियो को टेलीग्राम चैनल ले बा जोठी भी यू नो दैट वेरी वेल तो जहां भी जिंस अछि फ्री रे बहुत जिंस मिली परियो बा मिनिमल अमाउंट देले बहुत जिंस मिली परियो ऑनलाइन तो ऑनलाइन से जिंस उडा को देखि कि सिलेक्टिवली माने एटा बहुत टाइम रे हुए पिला कलेक्टर होबा को चाहितिली बट मटेरियल कलेक्टर हे गली मो माने हार्ड ड्राइव फुल हे जाइथिबो 6 जीबी 7 जीबी कि नु पढी नथिबी किछ तो दैट शुड नॉट हैपन यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव इन व्हाट यू चूज गोटे मटेरियल नउचंती बा गोटे कोर्स सब्सक्राइब करचंती फर्स्ट आस्क योरसेल्फ हाउ इट विल बेनिफिट मी विल इट रियली बेनिफिट सेटा पचारी कि तापरे नियंतु इवन जोटा फ्री रे अछि सेटा भी आपण जदी खालटा नेबे सब गुडा पढिबे किछि लाभ होबनी खाली इंटरफेरेंस होबो मल्टीपल जगह रे पढला माने इंटरफेरेंस होबो आपण आगे वाइजली सिलेक्ट करंतु जे सिलेबस आ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखि कि एई पार्ट ऑफ सिलेबस को को मटेरियल ता मते ठीक होबो सिलेक्टिवली सब जिंस चूज कला परे ऑनलाइन सब फ्रीली अवेलेबल अछि आराम से पढि परिबे आपण बागरे माने फोन में पढि परिबे बा जदि दरकार हो लैपटॉप जहां भी पैड एबे सेटा भी अवेल करि परिबे माने सते भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नथिबो मु भाबुची माने चिके चेष्टा कले हेई परिबो तो ऑनलाइन आपन को आजिकली सब मिलिबो दिल्ली जिबा आई डोंट थिंक इन टुडेस टाइम इट इज एट ऑल रिक्वायर्ड कि आपन दिल्ली जांदो आ बा दिल्ली गला आपन गोटे बहुत एज मिल जिवो सेमति आ नाही थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर
ना मार्क टा आगे कहबेनी आगे कहबे जे आपण कहि देबे माने एमती गोटे बाहर करि परिबे इंसिडेंट जे आपण होम साइंस को केमती एक्सपोज ले सपोज मु साइकोलॉजी नेली मु कहि देतिली जे इंजीनियरिंग बेले मु इलेक्टिव गली ओपन इलेक्टिव थिला सेठी मु ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी नेइतिली सेमिति जदी आपण को कॉलेज रे ओपन इलेक्टिव वगैरह थिबो सेटा आपण कहि परिबे जे सेतले मु फर्स्ट एक्सपोज हेली एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज वन वे नेसेसरी नुय आपण को मे बी से लिबर्टी न थाई पारे तो सेमती जदी न कहि परिबे तापरे देखिबे जे माने जतले व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन कहि परिबे व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन my first priority was to succeed in the exam, to clear the exam, and I analyzed all the optionals. I found home science very interesting, and I thought that I had already studied zoology, so if I am studying home science, it will be addition to my hat. You know, you have to be diplomatic in the interview. Bujhle? Scoring last se koi paribe, but that should not be the first statement. एटा भी कहि पारे आई कंसर्न इट इज बेस्ड ऑन माय इंटरेस्ट and the applications that I can have by opting home science. Home science पढ़िले it will help me in administration and in my home, in my family as well. So it will make me a better human being. मु zoology तो already पढ़ी सारिछि. So if I have the opportunity to study an additional subject and clear with that, I think that I will be able to clear with that. So that is a good thing. So interest कथा टा first interest कहबे, interest कहला परे कहबे जे एटा मते केमति हेल्प करिवो मो लाइफ रे, not only civil services मो लाइफ रे मते केमति हेल्प करिवो सेटा आउ analyzed तापर कहि दे परि I analyzed all. I thought that it will be good scoring as well, and my priority was to clear the exam. That is why I applied it. 3 points. Okay, thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you everyone. दीपक भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद मते अपॉर्चुनिटी देले टू इंटरैक्ट विथ यू. तमरो विशेष आउ होप रहिवो जे in coming days more and more people will be joining the civil services, be it in UPSC or OPSC from Odisha. OPSC तो definitely Odisha रो ही करिवे, but एटी जते जन प्रेजेंट अछंती जो मन को सहित मु इंटरैक्ट कली मोर विशेष रहिबो तांको भितर बेसी क्लियर करंतु, and in general Odisha रो एठू UPSC रे केमति बेसी सक्सेस पांतु. That will be my sincere wishes and hope. Thank you. So एई थरो जदि से पास करि नथन. So thank you so much, sir. इते डिटेल रे कहले आई थिंक हमको ए बड़ा बड़ा सेशन दरकार था. each and every section प्रीलिम में हमें कोन करिबा मेन जे GS1 केमति GS2 3 4 essay everything sir डिटेल रे कहले. आई थिंक जो सोर्स और सर जहां कहले that is the exact thing माने जाने सिविल सर्वेंट प्रिपेयर करिबा कथा एई वे रे. कारण साहब जो कथा कहउतिले कि राज्यसभा रे बहुत पिला देखथि किंतु 90% पिला जो माने यूपीएससी प्रिपेयर करथि माने राज्यसभा टिके देखथि पर्सपेक्टिव. कारण कमे ओटे जेतोला हम देखु जे जने एक्सपर्ट कहउची त तांकर व्यूटा बहुत मैटर कर. तेनो सार जो सोर्स कहले जो वे कहले पार्ट माने फॉलो करिवार जो टेक्निक कहले केमि रिवाइज करिवार that should be a guided माने मु कहबे प्रिंसिपल जो माने सिविल सर्वेंट civil service में prepare करी सर. So thank you so much. आई जो सेशन नु I hope कि तमे lot of things माने सिखि दिबा and definitely apply in your future journey रे and preparation करबा. Thank you so much sir for giving your time and thank you everyone for joining. I will again say, wait, I will again say success is about 99% perspiration, 1% inspiration. So be inspired from me, no issue with that, but do your hard work with utmost dedication and sincerity. आओ बेसी जो इनफॉरमेशन कलेक्शन ऊपर बेसी फोकस दियंतु ने. ए जो डिजिटल इंडिया रो तार एडवांटेजेस अछि, डिसएडवांटेजेस भी अछि. एते सारा गाइडेंस, एते सारा स्ट्रेटजी, एते सारा इनफॉरमेशन आपण जानि परिबेनी कोन करिवे. तो आपनकर निजो आगे सब गुडा देखि कि निजरो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस संगे इवैल्यूएट करला परे निजरो स्ट्रेटजी गुटे डेवलप करंतु एंड स्टिक टू दैट. माने आउ सोर्स इज नेवर इंपोर्टेंट. एज आई सेड, इट इज ऑल अबाउट द अप्रोच. How your objective should be clear. First objective to succeed in the exam. To succeed in the exam, what you have to do? You have to meet the demands of the exam. Demands का अपन को syllabus आउ previous year questions रो मिलिबो. सही demand टा को fulfill करिवार अछि जो भी source रो पढंतु. It should be a good source, but source are not that important.
ठीक अछि ऑल द बेस्ट टू एवरीवन Okay, thank you, sir. ଗୋଟେ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ हां एपटू छिडाए ହଁ ସାର୍ से पळे आसन आपण आसन एठी ଏଇଠି ସାର୍ आपण कोड छिडाए ମୁଁ ସାର୍ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି थैंक यू Thank you. I will do your groundwork, then you will reach out to me. I will definitely reply. But सेटा मु जस्ट करि पाइबी